So good evening everyone, and guys, welcome to today's revision session where we are going to revise with you the important current affairs regarding to your topics of economic and social issues and general affairs. So guys, with respect to your finance current affairs, see, Kritika ma'am has already taken the session on that thing. July and August revision she has already done. So today me and Devanshu sir will be doing the revision for ESI and your general affairs current affairs. Okay, with respect to ESI, again I would say guys the same thing that I have told you in your schemes also, that there are many topics in ESI also even which have already been covered in your month of June and May also. So I would say please do watch those sessions also if you're a student who are preparing or who are revising the things from YouTube, because they are very important. Okay, chalo, just give me a quick confirmation that whether my voice is audible to all of you. Okay, so my voice is audible. So let's begin with the session, because here I do not want that यार कोई discussion, मतलब देखो बिल्कुल जो questions पे explanation required है we will go to that part, otherwise we will solve the question, ठीक है, because we know each and every minute of your is very important. So first I will be taking, ठीक है, around 35-40 minutes में ये से cover करते हैं, उसके बाद दिवांशु sir will be here to take this session forward with regards to general affairs. So let's begin with the ESI section and let's begin with the first question for the day, guys. Okay ji, quickly tell me what will be the answer with regards to this specific question. So recently guys, in the backdrop of recent G7 announcements that have been made during Canada's presidency, so from here the first thing that we need to address is that the presidency for this year was with Canada. Next thing to be addressed is whether India is a member of G7 or not. So remember, India is not a member of G7. That's again something you need to remember. Now, during this conference of Group of 7 G7 ministers meeting, there was a discussion that was basically on global minimum tax framework. So the question was, which temporarily this G7 summit has basically said that they would temporarily exempt US multinationals from global taxation outside the US country. The point is, let's try to understand that what are the thresholds and tax sets under the OECDs, because Organization of Economic Cooperation Development's global minimum tax framework for large multinational enterprises. So tell me what will be the answer here. It's 10% minimum tax will be there on companies with annual revenue of over euro 500 billion. Then 12.5% minimum tax for companies with annual turnover of over $1 billion. 15% MAT, यानी कि minimum tax for companies with annual revenue exceeding euro 750 million. 20% minimum alternate tax for companies with annual revenue exceeding euro 650 billion, or 15% minimum alternate tax or minimum tax for companies with annual revenue exceeding euro or exceeding $500 million. So quickly tell me what will be the answer here. So Manish is saying option C will be the answer. Let's see, guys. So the answer here is absolutely right. Option C is going to be the right answer here. Let's try to understand what this global minimum tax is all about. Global minimum tax is a tax which is still under proposition or which is still under proposal. ठीक है जी, proposal में था किसके अंदर? OECD के अंदर, Organization for Economic Cooperation and Development. Then they framed this thing in 2021. It came into, that is, approval was given by OECD, and in 2024 it came into effect. Now the point here is, first of all, they said that they have a minimum rate of tax that would be paid by large corporations, which is basically at global level. क्या होता है, कंट्रीज लेवल पे हर कुछ होता है, बट एक ग्लोबल लेवल पे डिस्कशन किया गया था कि ग्लोबल लेवल पे देयर शुड बी मिनिमम टैक्स व्हिच द लार्ज कंपनीज शुड पे, बिकॉज अमेरिका इज फुल ऑफ लार्ज कंपनीज. तो यहां पे क्या यूएस ने अपने आप को इस एग्जम्पशन से बाहर निकलवा लिया G7 मिनिस्ट्री मीटिंग में. फिर उन्होंने बोला कि यार वहां पे दो पिलर का फ्रेमवर्क लगेगा. पहला क्या है, जिनकी अर्निंग यूरो 750 मिलियन से ज्यादा है, दैट इज अराउंड $812 मिलियन, उन पे 15% रेट लगेगा. ठीक है जी. और इफ अ कंट्री लिवाइज अ टैक्स रेट बिलो 15%, अदर कंट्रीज विल बी एबल टू इंपोज अ टॉप अप टैक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉप अप टैक्स? व्हिच मींस अदर कंट्रीज देन दे मे इंक्रीज द टैक्स. मतलब एग्जांपल देता हूं कि कनाडा और यूएस में ट्रेड हो रहा है. अब कनाडा ने बोला कि ग्लोबली बड़ी कंपनी है, हमें यहां पे 10% टैक्स लगाना है. अब इंडिया ने बोला ठीक है भाई, अगर तुम 10% लगा रहे हो तो इंडिया सेट वी कैन make it to 20%, which is a top-up tax.
they can add 15% plus 5%. This is how that can be balanced here. Okay, so this is the thing about global minimum tax that you need to remember here. Let's look at the next question here. The next question is, which among the following authority of India, or which statutory authority in India has basically revised this coastal inflation cost inflation index for financial year 26 so that they could adjust the capital gain taxation for specific asset classes in India? It's a very simple question. If you see, if you can just see the word cost inflation index, तो cost कहां पे ज्यादा impact create करेगी? Look at the options here. Ministry of Corporate Affairs, Central Board of Indirect Taxes and Customs, Income Tax Appellate Tribunal, Central Board of Direct Taxes, or Reserve Bank of India. Now see the cost, where actually the cost is going to give you an impact. Cost always gives you an impact when you are taxing somebody. तभी कॉस्ट इन्फ्लेशन मैटर करता है, नहीं तो क्यों मैटर करेगा? तो यहां पे आंसर क्या बन जाएगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स. ठीक है जी. इनकम टैक्स पे क्या इशू होगा यार? आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का इनकम टैक्स पे क्या इशू पड़ेगा? कोई इशू नहीं पड़ेगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स से तो वैसे कोई उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो ये सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस के लिए जो है प्रपोजल लाया गया था. अब हुआ क्या था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, you know that there are two type of taxing authorities in India. One is Central Board of Direct Tax, second is Central Board of Indirect Tax, which actually looks towards GST. Direct tax looks towards your direct taxation income like personal income tax, corporate tax. तो ये देखते हैं. इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई हमें we have to revise the cost inflation index, that is from 363 to 376. ठीक है जी. That's the number you need to remember. Now the point here is, here you have adjusted this thing for adjusting the purchase price for a long-term capital asset. Long-term capital asset. We have discussed about specified long-term capital assets such as land, building, gold. ठीक है, ताकि हम जो इन्फ्लेशन है उनको रियल फॉर्म में we can tax these specific gains here. Okay जी. Now comes the thing here, when it is going to be started. It is going to be started from this financial year of 25-26 and it will came into effect from next assessment year, that is 2026-27 here. अब as per the new income tax act उन्होंने ये खत्म ही कर दिया assessment year financial year. They have simply said it is income tax year. Simple, tax year is the new word that has been coined here. Okay, that is from the month of August. We will discuss about that also in the upcoming sessions here. Now remember important thing, if I talk about here, I want to ask you a very basic question, Gururaj also and other students also, with respect to direct tax. Can you tell me which tax under direct tax is contributing more than 50%? Is it corporate tax or is it personal income tax? Tell me quickly, guys. Vinita, Gururaj, do guys let me know the answer. ठीक है जी. In terms of direct taxation, which tax is contributing more? Personal income tax or your corporate tax? So guys, here the answer is actually personal income tax, or personal tax is important here. Why? The reason, because it is being said that for the first time in the history of taxation system of India in terms of direct tax, for the first time personal income tax has surpassed the corporate tax. So now personal income tax is contributing around 53 or 54%, जबकि corporate tax आपका 46% contribute कर रहा है. So it's a very important point that you need to remember, because they can ask you a question directly in your examination on this line also. Okay, chalo. Now let's look at the next question here. Recently, the CSIR IGIB launched India's first national biobank. Very important. India's first national biobank. ठीक है जी. अब ये क्या है? It is actually working under the Phenom India project and it is based on which country's biobank? It is based on which country's biobank to reflect India's genetic and cultural diversity. So what is the answer here? Answer here is it is actually based on UK's biobank initiative. Now coming to this thing, guys, very important is that is bio E3 policy. Biobank, biotechnology. Remember the thing to be remembered here. India is ranked third in बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्शन. अब इससे एक चीज याद रखना, व्हाट इज द टारगेट
what is the target we have set up for the year 2030? That is 2030 तक हम कितना बिलियन यूएस डॉलर ट्रेड करना चाहते हैं in terms of bio3 policy? What is the target we are setting up here? We are setting up a target of 300 million US dollar. That's the thing you need to remember here. 300 million by 2030 here. Now coming to this question, ठीक है जी, the thing that has taken place here, very important. Yes, good to see here. ठीक है. So what has done is Phenom India National Biobank has been launched, ठीक है, which has been launched actually by CSIRs, that is Council of Scientific and Industrial Research, Institute of Genomic and Integrative Biology. Okay ji, it is actually modeled on the UK based biobank, which is a well established international model for population of health studies. तो यार bio E3 policy इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है because there are lot of initiatives that have taken place in context of bio E3. Billion 300 billion, not million, billion 300 billion US dollar. Okay, चलो जी, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो ये है, अभी एक चीज और पढ़ाऊंगा, ANRF, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now let's come to this question. Which of the following correctly describes the origin and purpose of the Green Climate Fund, which is currently basically partnering with Asian Development Bank under the India Green Financing Facility? बताओ जी. It was established in 2015 under the Kyoto Protocol, headquartered in Bangkok, Thailand. Then it is said it is launched by World Bank in 2010 under the Paris Agreement, headquartered in Geneva. Established in 2010 under the Cancun Agreement by UNFCCC, headquartered in Sangdo, that is in South Korea. Formed in 2012, ठीक है जी, under the UN Environment Program based in Manila. Initiated in 2011 by the G20 countries headquartered in Brussels or Belgium. So what is the answer here? Answer here is actually option number C. It was set up in 2010 under the Cancun Agreement by the United Nations Federation on Convention and Climate Change here. And headquarter of Green Climate Fund is actually in Songdo, that's in South Korea. Now what is the news here? News here is, guys, Green Climate Fund along with Asian Development Bank have basically signed an agreement for setting up what? For setting up the India Green Financing Facility here. ठीक है जी. लेकिन देते हैं यार, अभी तक कोई आई डो नॉट हैव एनी आइडिया कि अभी PFRD का रिजल्ट कब आने वाला है, बट आने वाला होगा जल्दी ही. ठीक है, बिकॉज आपका एग्जाम भी आने वाला, तो इट विल नॉट बी टेकिंग, अभी आने वाला ही होगा. ठीक है, चलो, बट आई डो नॉट नो द एग्जैक्ट डेट कब आएगा. ठीक है जी, दैट्स द थिंग. चलिए, कमिंग टू द थिंग हियर, अब ये एग्रीमेंट क्या हुआ? द एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बेसिकली टू अनलॉक योर लार्ज स्केल पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स in India. ठीक है जी, for your energy technologies. Now here a 65 million US dollar facility will be shared by these two specific organizations for your credit guarantee here. Now why it is important? Because actually this is Asian Development's first collaboration with Green Climate Fund India. Important here. ठीक है. Now what is this Green Climate Fund all about? Green Climate Fund was actually set up under the Cancun Agreement, that was basically a city that is in Mexico. So this agreement basically provides financial support for mitigation, यानी कि to reduce the emission as well as the adaptation initiatives if you are taking here for controlling the environmental pollution. So 50-50 ratio is being given for mitigation and adoption. That is important. You need to remember here. और generally जितने भी आपके climate vulnerable countries हैं, वहां पे Green Climate Fund is basically providing you the funding. ठीक है, that is funding has been provided since 2015 here. I hope it's clear to everybody what is this Green Climate Fund all about and what is this news all about. Okay जी, चलिए, let's proceed towards the next question. You can see here the question is, under the Aspirational District Program, which of the following correctly represents the 5 key sectors used for district performance evaluation, which is arranged in increasing order of their weightage?
Now the weightage is very, very important. So this is not an easy question. This is really a difficult question and you can expect this sort of questions in the examination also. Question आपको मुश्किल भी देखने को मिलेंगे और मैं हमेशा बच्चों को एक ही बात बोलता हूं, whenever you are preparing for the examination, always prepare in such a manner that you should only think one thing कि पेपर हमारा सर मुश्किल आएगा, आसान तो नहीं आएगा. ठीक है, चलो जी. So what is going to be the answer here? Gururaj, what is going to be the answer here? Manish, Gururaj, Vishnu, what is the answer here? Answer here is, guys, that is option number C. So it is financial inclusion and skill development and basic infrastructure. They are contributing around 10%. Then it is extended by agriculture and water resources. वो इससे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सबसे ज्यादा आपका जो मनी है that is going to be utilized, or that is, if I talk about here, the maximum performance here will be basically for health and nutrition and education here. Coming to this thing, so the weightage on evaluation, 30% for health and education, then 20% is for agriculture here, just 10% for basic infrastructure and financial inclusion and skill development here. It is about Asian district program. Sorry, aspirational district program. We have another program, aspirational block program also. यहां पे there is nothing about banking finance. Financial inclusion यहां पे आता है. क्या aspirational block program में finance आता है? बताइए जी. Can anybody tell me the key performance indicators of aspirational block program also, guys? Quickly. Tell me what will be the ठीक है. If I talk about aspirational block program, guys, you will see health and nutrition is there, education is there, then agriculture is there, basic infrastructure and social development. So it is social development, but financial inclusion is not a part here. Okay, so that is the thing you need to remember here. Now coming to this part here, so basically there are 49 key performance indicators which evaluates these 5 parameters here. ठीक है जी. And it focuses on 3 C's, that is convergence, collaboration and competition. This is the 3 principle on which actually aspirational district program operates here. Okay. Chalo. Next question is with reference to the aspirational district mineral foundation. Okay, district mineral foundation program. Consider the following statements. Now you will see these sort of initiatives: aspirational district program, aspirational block program. Because in the later half of July, your session was actually going on. So your parliament session was going on. So these sort of initiatives have been discussed. Okay, ji. So let's see what is going to be the answer with respect to this specific question. The District Mineral Foundation was established under the Mines and Minerals Act of 1957 and is operationalized in all districts of India. Whether it is operationalized in all districts of India or in specific districts. देखो यहाँ पे ना बड़ा important keyword है all districts. District Mineral Foundation or District Mineral Foundation contributions are calculated as a fixed percentage of royalty varying by grant date of mining leases. फिर आता है the DMF fund collection has crossed 1 lakh crores over the past decade. ठीक है जी, with Odisha as the top contributor. Whether Odisha is the top contributor or whether Jharkhand is the top contributor or whether Chhattisgarh is the top contributor. That's the point you need to remember. Now see here, guys, it is about District Mineral Foundation where there is no mine available here. What is the purpose of making a District Mineral Foundation there? So what will be the answer here? Answer here will be 2 and 3 is going to be the answer here because it is going to be set up in selected districts of India. जहां पे काम ही नहीं है तो वहां पे क्यों बनानी है ना? तो ये याद रखना है यहाँ पे. अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के, सबसे पहले इट इज obviously it is working under Ministry of Mines. ठीक है जी. नॉन प्रॉफिट फंड है which is actually established in mining affected districts. So important is it is set up in mining affected districts, not all districts. Simple as that.
ठीक है जी. Then state governments are actually empowered to empowered under the MMDR to define the composition and functioning. तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है. अब ये फाइनेंसिंग कैसे होती है? 30% आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है फॉर लीजेस granted before 2015. If it is granted after 2015, then it will be 10% here. ठीक है. Now guys, why I'm explaining about District Mineral Foundation? Because along with that, this National Critical Mission on Mineral is important. And this question is not, you can expect, I would say, this question is not that much important for your ESI part, but with regards to the GS part of phase 1, ये phase 1 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. phase 2 में से क्वेश्चन आने के चांस थोड़े से कम है. So it is actually going to be monitored with प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है. So that is basically how your funds are going to be set up here, covered in 645 districts. Important part, top 3 states, Odisha number 1, Chhattisgarh and Jharkhand. So OCJ, that is how you need to remember here. Okay, chalo. Let's look at the next question here. As of July 2025, consider the following statements with reference to India's standing in UNESCO World Heritage Sites here. Important, UNESCO World Heritage List, because recently, important point, 7 tentative sites have also been added. तो पहले तो मुझे आपको कमेंट करके बताना है आज की क्लास में, ठीक है जी. आफ्टर द सेशन एंड्स, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर द 7 tentative World Heritage Sites which are recently got added into the tentative list. Then coming to this question, World Heritage Sites. So how many World Heritage Sites are there in India? So India consists of 44th World Heritage Site, that is Maratha Military Landscape. Absolutely right. And obviously it is actually consisting of 12 forts, where 11 forts are in Maharashtra and the one fort is in Tamil Nadu, that is Jinji Fort. Okay. Now if I ask you about this specific thing, tell me how many cultural heritage sites are there in India? And how many mixed heritage sites are there in India? How many natural heritage sites? So India now has 36 cultural heritage sites, 7 natural and 1 mixed heritage site in context of total UNESCO World Heritage Sites that are there in India here. अगर हम बात करें 44th ये है, 43rd कौन सी थी? 43rd थी, that is the Mohdams of Assam. ठीक है, that is the Mohdam burials of Assam, that is related to Ahom dynasty. Second, 42nd, that is your Hosaleshwar temples, Hosala temples. 41st, Shanti Niketan. 40th, Dholavira. Then coming to this thing, which country has the maximum number of World Heritage Sites? That is Italy and China. So Asia Pacific में after China, India is the second country which has the maximum number of World Heritage Sites that are there in, that are being included into the UNESCO World Heritage List. Now if I come to the next question again from UNESCO, guys, the next question here that I want to ask you here is, in context of UNESCO World Heritage Site, which is the next site that India has proposed for the next year consideration? So which is the next heritage site that India has proposed for 2026? That is Sarnath. तो सारनाथ इंडिया ने प्रपोज किया है 2026 के लिए, ठीक है जी. सो दैट इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर हियर. कमिंग टू यूनेस्को, हेडक्वार्टर्ड इन फ्रांस, 1945 it was established here. Membership is 194 members and 12 associated members are there. Coming to the part here, it consists of 21 member states which has being appointed for a term of 6 years here. ठीक है जी. इंडिया के कंटेक्स्ट पे बात की जाए तो इंडिया वाज इलेक्टेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन 2021 till the year 2025 here. Now coming to the part here, India is ranked 6th globally. Italy and China, they have the highest number of sites that have been included here. The first 4 sites was Ajanta Caves, Ellora Caves, Agra Fort and Taj Mahal here. Okay ji. So that is the thing you need to remember here. Now India is going to nominate Sarnath for next year here. Now I have an additional question here. Can you tell me which country has recently announced that they are going to exit UNESCO? Which country has recently announced in the month of July that they are going to exit UNESCO? UNESCO अपने आप में बहुत important है. Which country, guys? Manish, Gururaj, what is the answer here? Which country has decided that they are going to exit UNESCO?
that is USA, United States of America. Okay, chaliye. Coming to the next question, Global Biofuel Alliance. I have told you that there are 5 alliances which are very, very important. Global Biofuel Alliance, International Big Cat Alliance, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, International Solar Alliance. These 4 are very important because the headquarter of these organizations are going to be set up. 2 के बन चुके हैं, 2 के बनने वाले हैं. Global Biofuel Alliance is a very important alliance that India has actually proposed during its G20 membership, during its presidency here. Now recently which country has become the member? So Namibia जो है उसने ज्वाइन कर लिया है as a member of Global Biofuel Alliance. Now consider, tell me which of the following, ठीक है, countries in relation to the status is not a founding member of Global Biofuel Alliance. India, Brazil, Singapore, Germany. So the answer is, which of the following is not? Germany is not one of the founding member of the alliance. Remember, it's not one of the founding member of the alliance. Okay, ji. Coming to this alliance that was set up in 2023 during India's presidency. Okay, ji. Important point is to basically how we could adopt the biofuels and work towards sustainable energy transition. This is again something which India is basically now focusing on, that is bio E3 policy. Founding members कौन थे? ये थे जी. India, USA, Brazil were the top contributors, so they were the initial members. Along with them, Italy, Argentina, Singapore, Bangladesh, Mauritius, and UAE. They were the founding members of Global Biofuel Alliance. ठीक है जी. Now, Namibia has also joined this alliance, expanding the coalition research into African countries also. ठीक है. Objective simple है. How we could focus towards sustainable energy transition with the use of biofuel based technologies. Okay, in context of that, the bio E3 policy is important, bio bank is important. Coming to the next part, that is your ethanol blending. These all becomes important looking towards this alliance. बस इंडिया ने प्रपोजल, तो इंडिया यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव खुद भी हो रहा है. ठीक है, चलो जी, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन है. Global Biofuel Alliance, second important alliance, International Solar Alliance. Moldova became 107th permanent member of International Solar Alliance. Now that is the news that we have discussed in the month of August. ये अगस्त की न्यूज है. अब यहां पे क्वेश्चन आता है with regards to the International Solar Alliance. It has a strategy known as towards 1000 strategy by 2030. Which of the following is a goal under this towards 1000 strategy? That is mobilizing 100,000 billion in global solar investment, providing clean energy access to 100 million people, installing 1000 gigawatt of solar energy capacity, reduction of 1000 million tons of carbon dioxide emissions annually, deploying 1000 solar mini grids across the least developing countries. ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है. Train 1000 engineers per year under the International Solar Alliance Fellowship Program. That is not a part of towards 1000 strategy. So my answer will become option number A. 1, 2, 3 and 4 is going to be the right answer here. ठीक है. Objective, if I talk about International Solar Alliance, is very simple. Mobilizing 1000 billion, 1000 million people, 1000 gigawatt of energy and 1000 million tons of carbon dioxide we want to reduce here. ठीक है जी. Vision is very simple. Let us together make the sun brighter, and it focuses on a vision that is every home, no matter how far, will have a light here. With regards to its headquarters, so it is the first international organization which has its headquarters in India, that is in National Institute of Solar Energy here. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बेसिकली याद रखना. और इंडिया एंड फ्रांस हैव come together to make up this specific alliance here. Coming to the next question, guys. As of July 2025, under the India-funded Kaladan multi-modal transit transport project. So it is regarding the, in context of BIMSTEC ports conclave. Okay, in context of BIMSTEC ports conclave, this is the question that has been asked. So Kaladan multi-modal transit project aimed at enhancing the connectivity with Myanmar and India's northeast cargo is transported from Kolkata to which specific port of
Myanmar, that is in Bay of Bengal, and further inland to which specific state through the Kaladan river here. Okay. Now, guys, if I talk about this specific question, there is a question which was very, very difficult that has been asked on Kaladan multi-modal project also. I think that was, I do not remember 22 था या 21 था, दोनों में से 22 में था या 23 में, दोनों में से किसी एक में पूछा गया था. और इसका क्वेश्चन पूछा गया था किस स्पेसिफिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट करती है. आंसर दैट वाज बिम्स्टेक. काफी मुश्किल क्वेश्चन था, मैं बोलूं. ठीक है, बट अब देखो बिम्स्टेक के अंदर ही ये बेसिकली बिम्स्टेक का ही पार्ट है जहां पे कोलैबोरेशन बनाई जा रही है. तो बेसिकली ये क्या कर रहा है दोस्तों, इट इज एक्चुअली सेटअप ऑन रिवर सिक्वे एंड इट इज फर्दर इनलैंड टू पालित्वा, दैट्स अ प्लेस हियर. ठीक है, सो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट व्हिच वाज सेट अप इन 2008. ठीक है, वेयर इट्स अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेयर इंडिया वांट्स टू कनेक्ट म्यांमार, इंडिया वांट्स टू कनेक्ट इट्स नॉर्थ ईस्ट विद द कार्गो शिपमेंट. ऑब्जेक्टिव क्या था, जो हमारा बांग्लादेश पे डिपेंडेंसी को हम खत्म करना चाहते थे. वी वांट टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द चिकन नेक कॉरिडोर हियर. ठीक है जी, वेयर दीज आर द इंपॉर्टेंट वाटरवेज एंड रोडवेज दैट आर इंपॉर्टेंट. So first of all, Kolkata is going to be connected to Sittwe port via Bay of Bengal. Then Sittwe is further on connected to Paletwa, that is on Kaladan river. Then Paletwa will be connected, ठीक है, Paletwa to Indian Myanmar border पे आ जाओगे. और फिर क्या होगा आपका Long Talai. Long Talai is a place in Mizoram. So basically it is actually connecting Mizoram and West Bengal through this specific program here. Okay ji, chalo, let's come to the next question. As per the World Bank's Spring 2025 Poverty and Equity Brief, India ranks among top 10 globally in income equality with a Gini index of 25.5. Consider the following countries, identify which among them were not ranked among the top 5 most income equal nations globally. So it's a very important question, guys. These sort of things now we are seeing in the examination also, these sort of questions. Quickly tell me what will be the answer here. Slovak Republic, Belarus, India, Belgium, Slovenia, Netherlands. तो कौन सा नहीं है जी? So answer is, guys, that is 4 and 6. Neither Belgium nor Netherlands is a part of top 5 countries here. Coming to first of all the top 5 countries. So India is ranked at 4th. ठीक है जी, विच इज बिहाइंड स्लोवेका, दैट इज स्लोवक, स्लोवेनिया, स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, बेलारूस, और चौथे पे इंडिया आता है. अगर हम बात करें इंडिया को फॉलो कौन कर रहा है, फिर 5th नंबर पे आता है यूक्रेन. तो यूक्रेन इज एट 5th. देन इफ आई टॉक अबाउट हियर, दीज आर द रिमेनिंग कंट्रीज. सो नेदरलैंड इज एट नंबर 6, मोल्डोवा 7, ठीक है, रेकिया नंबर 8, बेल्जियम 9, Kyrgyzstan or Kyrgyz Republic is number 10 here. ठीक है जी, चलो, so that is the thing here. ठीक है जी. Now India is basically here, if I talk about here, why it's a very important thing for India, because India has outperformed even the G7 and G20 countries. तो कोई यहाँ पे G7 कंट्री ने, कोई G20 ने, सबसे ऊपर ही इंडिया आता है. ठीक है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स का गिनी 41.8 है, चाइना का 35.7, इंडिया हैज द बेस्ट. ठीक है, बिकॉज यहां पे लो इनइक्वालिटी इंडिया ने शो की है यहां पे. ठीक है, दैट्स अ थिंग हियर. समबडी सेइंग कि सर क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो. देखिए क्वेश्चन नंबर पॉइंट इज कि यार आप देखो जनरल कॉन्टेक्स्ट में लिख देते हैं, ठीक है, बट अगर आपकी बात करें तो आज क्वेश्चंस यार मेन थी. ठीक है जी, तो नंबरिंग अगली बार से सर वो भी इंक्लूड कर दूंगा. मतलब मेन चीज तो आप नंबर पे फोकस करो ना, क्वेश्चन का आंसर क्या है. ठीक है, चलिए. Coming to the next question. So as of July 2025, under the National Sickle Cell Anemia Mission, ठीक है जी, how many focus districts and states have been identified for screening and intervention? It's a very important mission where by 2047 we are focusing on elimination of sickle cell here. By 2030 we are going to focus on elimination of malaria here. By 2025 we are actually focusing on elimination of tuberculosis. These are the important diseases that you need to remember. ठीक है जी, चलिए. Now coming to this question here, under the National Sickle Cell Anemia Mission, ठीक है जी, tell me which of the how many states have been identified. So answer is
365 districts across 17 states have been identified here. अब इसी कंटेक्स्ट में अगर आप बात करोगे गुजरात की, गुजरात में recently they have started an initiative where they said that they are now going to focus, गुजरात is going to focus on the identification of sickle cell. ठीक है, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन पे काम कर रहा है, बिकॉज अगर हम बात करेंगे फोकस स्टेट्स के ऊपर, सो इफ आई से हियर गुजरात इज अमंग देम, बट हाईएस्ट इंसिडेंस रेट में भी याद रखना OCMMR, OCMMR, तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र आ गया और ये आ गया ओडिशा छत्तीसगढ़ और सॉरी जी नॉट आर गुजरात. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर है, एंड दैट इज व्हाई गुजरात जो है अभी इस पे काम भी कर रहा है. गुजरात ने रिसेंट इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया ऑन द सिकल सेल एलिमिनेशन. ठीक है, ये मैंने बताया था मेन टारगेट क्या था, 7 करोड़ पीपल यू वांट टू स्क्रीन, ठीक है, इन द एज ऑफ 0 to 40 इयर्स इनिशियली, ठीक है, एंड यू वांट टू एलिमिनेट दैट बाय 2047. चलिए जी, let's look at my next question. Next question is, which of the following is not one of the officially declared Panch Amrit climate goal announced by India at the Conference of Parties 26 under the Paris Agreement framework? Very very important, very important, because आप बार बार पढ़ते हो ये वाला 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएंगे, हम 500 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज द 5 फोकस स्ट्रेटेजी वेयर इंडिया इज फोकसिंग, ठीक है, विद रिगार्ड्स टू क्लाइमेट चेंज. So achieve net zero emission by 2027, 2070, absolute right. Increase non-fossil fuel energy adoption to 500 gigawatt by 2030. Reducing carbon intensity by 60%. 60% था, 45% था, 50% था by 2030. Tell me. Fulfilling the 50% of energy requirement from renewable sources by 2030 and reduces 1 billion tons of projected carbon emission by 2030. So what is going to be the answer here? Answer is that option number C is wrong, because यहाँ पे टारगेट था 45%, 50% का टारगेट था, 45% का टारगेट था. और न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंडिया ने जो टारगेट रखा था 50%, ठीक है, जो 500 गीगावाट आप 50% जो आप अपना एनर्जी स्टेटस नॉन फॉसिल फ्यूल से लेके आना चाहते हैं, वो आपका यहाँ पे इंडिया ने अचीव कर लिया है. ठीक है, सो इंक्रीजिंग इंडियाज नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट, अचीविंग 50% ऑफ इंडियाज एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, 45% कार्बन इंटेंसिटी करना चाहते थे, 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड you want to reduce, and you want to become net zero by 2070. So all these 5 targets are very very important for your upcoming examination. ठीक है, now let's talk about the next question, that is ONDC. यार very very important, मैंने बहुत बार डिस्कस किया आपके साथ ONDC. Now coming to the open network for digital commerce, as recently क्या हुआ, ONDC सहायक WhatsApp chatbot has been launched here. ठीक है जी, let's look at the question here. Which of them are the founding members of the ONDC? Quality Council of India, Protein E-Government Technologies, National Payment Corporation of India, Ministry of Rural Development. तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा जी, कौन है यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर? बड़ा आसान सा सवाल है. So आंसर इज एक्चुअली ऑप्शन नंबर C. 1, 2 and 4 is the right answer. देखो यार 1, 2 and 4 नहीं होगा, यहाँ पे 1 and 2 होना चाहिए. ठीक है जी, चलो जी. तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आंसर नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा. सॉरी फॉर दिस पार्ट, एक्चुअली ऑप्शन नंबर ए 1 and 2. सॉरी फॉर दिस पार्ट, ऑप्शन ए. ठीक है जी, चलिए. सो बेसिकली अगर मैं बात करूं दोस्तों, ONDC अगर हम बात की जाए तो ONDC स्टार्ट हुआ था 2021 में, बट लॉन्च हुआ 2022 में. इट इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. Important thing, it's an organization which focuses on democratization of e-commerce network, जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों को ही बोला है कि आप डेमोक्रेटाइज कर सकते हो अपने आप को. ठीक है जी, डेमोक्रेटाइज का मतलब है कि यार अगर कोई बायर है तो वो अपने आप को लिस्ट कर सकता है, सेलर अपने आप को लिस्ट कर सकता है. ठीक है जी, और फिर इंपॉर्टेंट क्या था, फाउंडर थे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हियर. अब रिसेंटली क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME स्कीम लॉन्च, इसका नाम है टीम.
that is trade enablement and marketing initiative to support the micro and small enterprise, जो कि ONDC के ऊपर अपने आप को ऑनबोर्ड कर रहे हैं। ये किसके लिए काम करेगा? ऑनबोर्डिंग के लिए फायदा पैसा देगा, कैटलॉगिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड पैकेजिंग। और दिस इज व्हाट पर्पस they are going to basically provide you the funding here, and 50% of the beneficiaries of team would be women oriented। ठीक है जी। There's a question from last में, सर क्या आपको बैच लेना चाहिए? देखिए जो बैच है वहां पे ऑब्वियसली बात है, आपके साथ पूरा डॉक्यूमेंट रीड पढ़ाते हैं। जो आपकी क्लासेस हैं यूट्यूब पे, वहां पे बेसिकली क्या, अगर आप अपनी तैयारी खुद कर रहे हैं, आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, तो रिवीजन के लिए यू कैन गो विद दिस क्लासेस। बट अगेन ऐसा नहीं है कि इन क्लासेस में सब कुछ कवर हो जाएगा, बिकॉज टाइम लिमिटेशन है, तो सब कुछ कवर करवाना पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको कोर्स में प्रोवाइड करवा रहे हैं, वी आर टीचिंग यू फ्रॉम दोस डॉक्यूमेंट्स ओनली, सो दैट आपके डॉक्यूमेंट्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाए। ठीक है, चॉइस इज योर। तो ऐसा नहीं है, देखिए ये क्लासेस जो यूट्यूब क्लासेस दिया कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे हम आपके डेली सेशंस भी लेके आते हैं, जैसे सिटी 360 है, फाइनेंस 360 है, यू कैन टेक दोज बेनिफिट्स ऑल्सो। पर थोड़ा सा आपको फिर एक कंपाइलेशन पे अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप कोई भी स्पेसिफिक कंपाइलेशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो अंडर द रिसेंटली अप्रूव्ड वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, व्हाट इज द प्रपोज्ड शेयर होल्डिंग बिटवीन JLN जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड योर महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड। तो क्या प्रपोजल दिया गया है जी? So proposal is that is 74% actually Jawaharlal Nehru Port Authority is going to hold, and 26% is going to be held by the Maharashtra Maritime Board here। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर दिस कॉरिडोर इज इट इज कंसिस्ट ऑफ रेल, रोड एंड वाटरवेज, तीनों मोड यहां पे इंक्लूड करते हैं। इंडिया यहां पे किसको एक्चुअली चैलेंज कर रहा है? इंडिया इज एक्चुअली चैलेंज हियर, इंडिया इज एक्चुअली चैलेंजिंग हियर दी काउंटरिंग द BRI इनिशिएटिव ऑफ चाइना, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन है समाधान पोर्टल के ऊपर। समाधान पोर्टल अंडर MSME विच फोकसेस ऑन डिस्प्यूट ऑफ और ग्रीवांस रिड्रेसल डिस्प्यूट्स हियर विद रिगार्ड्स टू MSME। समाधान निकाल दीजिए। ठीक है जी, आपको मुझे बताना विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज एक्चुअली नॉट कवर्ड अंडर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क ऑफ समाधान पोर्टल। अगेन नॉट एन इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट आई वुड से, नॉट एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, सो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, देन वी हैव EPFO सॉरी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 और मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। कौन सा इसके अंदर नहीं आता है? क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफ द समाधान पोर्टल हियर। सो आंसर हियर इज दैट इज थर्ड इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट हियर। ठीक है, कमिंग टू द एक्ट्स, इफ आई टॉक अबाउट हियर पेमेंट एंड ग्रेच्युटी एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो यहां पे जो हमारा थर्ड पार्ट है, Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act is not under the Samadhan portal here. Okay, चलो, coming to this portal, it was set up in 2020, ठीक है, to basically look towards the any sort of disputes that is arising, तो उसको redress करने के लिए इसको launch किया गया था। चलो जी, coming to the next question here, which of the following announcements that HSBC, ठीक है, regarding the announcement that HSBC is founding member has exited this net zero banking alliance. Now question is, how many Indian banks remain the member of net zero banking alliance? Now what is this net zero banking alliance? That is also we are going to discuss here. But आपको मुझे बताना है कितने banks हैं अभी, ठीक है, who are part of this alliance here. So guys the answer is that is एक भी बैंक नहीं है, एक ही बैंक था HSBC, उसने भी छोड़ दिया है। अब ये है क्या? The Net Zero Banking Alliance is actually a part of UN Environment Program Finance Initiative, where the objective is let's bring all together banks together so that they could commit on aligning the lending specifically towards the net zero greenhouse gas emission by 2050. HSBC, which is one of the founding members since inception, became the first UK-based bank
टू एग्जिट दिस स्पेसिफिक अलायंस। और इंडिया में तो अभी तक कोई बैंक इसका पार्ट ही नहीं बना है, ठीक है जी। इंडिया में नोबडी इज द पार्ट है, नो इंडियन बैंक इज अ मेंबर ऑफ द नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, ठीक है। चलो, let's look at next question on ANRF. Government of India has allocated total estimated cost of how much crore rupees for setting up the Anusandhan National Research Foundation. Very very important, prime Indian organization for scientific research, ठीक है जी, over the period dash मतलब which year, to promote research, innovation and entrepreneurship across India. So what is going to be the answer here? How much fund India is going to provide? India is going to provide, the government is going to provide 50,000 crore rupees. That is from 2023 to 2028 here. Now my question is, who is the CEO of ANRF? बताइए जी, who is the CEO of ANRF? That is Mr. Shivakumar. Shivakumar ji is the CEO of ANRF, and that is again something that you need to remember. That's very very important. ठीक है, भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है एएनआरएफ। मैं आपको दो टॉपिक्स बता रहा हूं, बायो E3 एंड एएनआरएफ, बोथ आर इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सीईओ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, चेयरमैन नहीं बोल रहा मैं, नीलेश, फर्क है दोस्तों में, नीलेश एंड गौरव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चेयरमैन, एंड ही इज एक्चुअली द चेयरमैन ऑफ नॉट एग्जीक्यूटिव काउंसिल, चेयरमैन ऑफ मॉनिटरिंग काउंसिल, मॉनिटरिंग कमेटी, ही इज द चेयरमैन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी हु इज द चेयरमैन, तो जो सेक्रेटरी बन जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के, वो। अगर हम बात की जाए यहां पे, मैं सीईओ की बात कर रहा हूं, सीईओ बने हैं मिस्टर शिव कुमार जी, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस यू नीड टू रिमेंबर हियर। चलो, कमिंग टू एएनआरएफ, 50,000 crore rupees गवर्नमेंट इज बेसिकली गोइंग टू स्पेंड ऑन दिस स्पेसिफिक इनिशिएटिव, वेयर 30,000 crore rupees is going to be actually provided with the help of industry here, 10,000 government of India and 4,000 from SERV, which actually has now got subsumed under the ANRF, जो कि इससे पहले हमारा साइंस रिसर्च को देखता था। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एज आई टोल्ड यू, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स लाइज विद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्निंग बोर्ड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी, एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर सेक्रेटरी, ठीक है जी, ये बन जाते हैं गवर्निंग बोर्ड के मेंबर। अगर एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मैं बात कर रहा था, वो आ जाते हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ India. Okay, so these are the two things you need to remember here. बात करें एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है, उनके साथ ही कैन अपॉइंट अप टू 5 मेंबर्स फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज, ठीक है जी, सोशल साइंस से हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, और ठीक है, और सीईओ भी वो अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि रिसेंटली अभी उन्होंने अपॉइंट किए भी हैं। चलो, let's look at the next question. Ramsar sites. So the 15th meeting of Ramsar Convention has taken place. Tell me first of all where it has taken place. Where has the 15th meeting of Ramsar Convention has taken place? Quickly tell me, guys. Acha, how many Ramsar sites in India? Remember, India consists of 91 Ramsar sites. Now let's look at the question. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 कहां पे हुई है? ये हुई है जिम्बाब्वे में, ठीक है। चलो, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। द रामसर कन्वेंशन इज नेम्ड आफ्टर द ईरानी सिटी ऑफ रामसर, लोकेटेड ऑन कैस्पियन सी। अब यहां पे हमने आपके साथ एक वर्ड प्ले किया है कि नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। इंदौर एंड उदयपुर आर अमंग द 31 cities globally accredited under the wetland city accreditation system here. The 14th conference of parties to the Ramsar Convention was actually taking place in Wuhan. So what is going to be the answer here? 1, 2, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, or 1, 2 and 3? The right answer is option number E, as all the statements given here are correct. Now, what is the point to be remembered here is that India has proposed a resolution of promoting your sustainable lifestyle for the wise use of wetland here. ठीक है जी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया ने बोला सबसे पहले हमें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना है, ठीक है जी, सो दैट वी कुड मैनेज द वेटलैंड्स हियर। इसमें इंडिया ने अपने अमृत धरोहर इनिशिएटिव के बारे में बताया है कि भाई हमने तो कर ही रहे इस पे काम। अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, ठीक है जी, एंड सपोर्टिंग इंडियाज नेशनल इनिशिएटिव्स लाइक मिशन लाइफ, मिशन सहभागिता और सेव वेटलैंड कैंपेन हियर। Coming to this part, wetland city accreditation. So for the first time, there were 2 cities that got nominated from India.
देवर इंदौर एंड उदयपुर। वन सिटी टू रिमेंबर वाज भोपाल। भोपाल यहाँ पे नॉमिनेट नहीं हुआ था, भोपाल इंडिया ने नॉमिनेट किया था बट सिलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, कितनी साइट्स है इंडिया में? 91 है। रामसर वाज अ कन्वेंशन दैट वाज साइंड इन 1971, ठीक है जी, फ्रॉम अ सिटी नोन एज रामसर। एंड इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ रामसर इन 1982 हियर। ओके, चलो, तो रामसर के बारे में बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पिछले मंथ्स में भी, तो उनको भी एक बार रिवाइज करना है। तभी मैं बोल रहा हूं जून मई को रिवाइज करना है। डू नॉट लीव दोज सेशंस विद रिस्पेक्ट टू ये से तो करके जाना है। ठीक है जी, चलिए। एज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग एफर्ट्स टू डिजिटाइज कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज लॉन्च्ड द ई जागृति पोर्टल इन विच ईयर टू बेसिकली यूनिफाई द प्लेटफॉर्म्स लाइक ई दाखिल हो गया, कॉन्वेंट हो गया और OCMS हो गया। तो कौन से ईयर में ई जागृति पोर्टल स्टार्ट हुआ था? दैट इज इन द ईयर 2023 हियर गाइस, 2023। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, ई जागृति पोर्टल जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या था कि भाई हमें ये जितने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं रिगार्डिंग कंज्यूमर ग्रीवांसेस, वी कुड क्लब देम टुगेदर। लाइक ई दाखिल, दाखिल इज राइजिंग, दाखिल करना ना, एंटर करना है, सो फाइलिंग कंप्लेंट्स। Then is ConfoNet, computerization of your forums. Then online computerized monitoring system. इन सबको इंटीग्रेट किया गया। Then you create a real-time tracking and online hearing here with the help of e-Jagriti portal that was set up in 2023 here. Now coming to the act here, it basically tells that there are 3 levels where a person can appeal. That is National Judicial Commission, State Commission, or you have district commissions here. अब यहां पे जो कमीशन हैं, यहां पे आपको फाइलिंग करने के लिए ई जागृति पोर्टल कैन बी अ मीडियम टू फाइल अ थिंग। ठीक है जी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सेज दैट डिस्पोजल, सो 3 months इफ दिट इज इशू ऑन टेस्टिंग, तो 3 महीने में टेस्टिंग करवा दो। 5 months इफ टेस्टिंग, मतलब 3 महीने बिना टेस्टिंग के, 5 months इफ टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। ओके, चलो जी, let's move towards the next question. India achieved its 20% ethanol blending target ahead of the schedule under the ethanol blended petrol program. ठीक है, now this is very important because the initial target India was set up was 2030, ethanol supply year 2030 का टारगेट था, हमने इसको 25 में अचीव कर लिया, that is E20 target. Now the question is the blending progress is actually measured using the concept of ethanol supply year. Now in India, what is the tenure of this ethanol supply year? That is from 1st of Jan to 31st December, 1st April to 31st March, 1st June to 31st May, 1st November to 31st October, or 1st July to 30th June. So what is the ethanol supply year for India? That is actually your 1st of November to 31st of October. Remember, ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। 1st of April to 31st of March हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, और ये तो नॉर्मल ईयर ही होता है जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं हैप्पी न्यू ईयर वाला। ठीक है जी, चलिए, लेट्स कम टू दिस पार्ट हियर। इंडिया हैज अचीव्ड इट्स 20% एथनॉल ब्लेंडिंग टारगेट, ठीक है, 5 years ahead of its original target of 2030। ठीक है, कमिंग टू दिस पार्ट हियर, दिस इज समथिंग आई वुड से यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया कि इंडिया में एथनॉल ब्लेंडिंग में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? दैट इज मेज। सो मेज इज वन ऑफ द प्राइम सोर्स ऑफ ethanol followed by sugarcane and molasses here. ठीक है, objective is simple. We want to promote renewable fuels and we want that farmers and agriculture economy, they can also get the money here. That's the point here for ethanol supply blending. ठीक है जी, चलिए, next is guys in context of US announcements that I've already discussed with you. अब देखो US ने तो यूनेस्को छोड़ दिया, बट इसके साथ आपको मुझे ये भी बताना है जो कंट्रीज न्यूज़पेपर्स में they were highlighted, which of these are again not member of UNESCO? Israel and Liechtenstein, Switzerland and Bhutan, Iran and Syria, Ukraine and Monaco, and South Korea and Singapore. अब अराउंड 190 के आसपास मेंबर्स हैं यूनेस्को के। क्या सारे याद करने? नहीं, मैंने बोला अगर कोई न्यूज में ही हाईलाइट हो जाता है तो वो याद रखना है। ठीक है जी, अब यहां पे कौन से नहीं है? व्हाट इज द आंसर हियर? आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इजराइल एंड लिechtenstein is actually not the members here. ठीक है, अब क्या हुआ है, यूएस ने तीसरी बार इसको छोड़ दिया। यूएस ने पहले 1983 में छोड़ा था कि भाई हम तो प्रेसिडेंसी थी, कोई प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के टाइम पे छोड़ दिया था। 17 में डोनाल्ड ट्रंप के आगे छोड़ा था, 2003 में
रिजाइन किया था, 23 में भी लेके आए, फिर छोड़ दिया। अब ये क्यों छोड़ा था? बिकॉज द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, क्यों छोड़ा था? बिकॉज यूनेस्को रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन, और ये चीज यूएसए को पसंद नहीं है। ठीक है जी, ईरान नहीं, पैलेस्टाइन, पैलेस्टीन को रिकॉग्निशन दे रहा है। बेसिकली इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है ना, इजराइल को नहीं देता है वो, इसको तो देता ही है। Getting to it is actually about Palestine that is the main issue. It's not about Israel. ठीक है, it recognizes Palestine. That is one of the prime reason why USA is actually always say कि हमें छोड़ना है। ठीक है, so it has consistently 194 member states, and I would say because these were named, Israel and Palestine is not a member here. Palestine they have included, but they have not included Israel. Israel ने भी छोड़ दिया था, Israel ने छोड़ा था कि हमें नहीं है, because if you are adding Palestine, we are not here. Israel को छोड़ा तो हमारे ट्रम्प साहब ने बोला भाई भाई, इजराइल यूएस भाई भाई, हम भी छोड़ दे। तो दैट इज द रीजन, मेन रीजन। ओके, चलो coming to the headquarter is in Paris. So that I have already discussed UNESCO with you. That is the prime thing you need to remember here. ठीक है, that is anti-Israel bias. That's the main issue. Okay जी, चलिए coming to the next question. As per the Ministry of Finance updation on the AEO program, ठीक है जी, there was a discussion on the authorized economic operative program. Which of the following is actually not a category of EEO status that is India is providing? Is it AEO T1, AEO T2, T3, T4 और LO, which is not part of India? इंडिया कौन सा नहीं है? इंडिया में T4 नाम की कोई कैटेगरी ही नहीं है। There is no category of T4. ठीक है, basically if I talk about here in the authorized economic operative section, important here is this is a platform which basically has 3 tier classifications. India has made its additional classification which is known as LO, not 4. So first is entry level accreditation, second is mid level, third is highest level, and the objective is that जो भी आपके कस्टम्स में पेपर इश्यूज आते हैं, द पेपर थिंग्स, वी नीड टू मेक दैट थिंग हैसल फ्री. दैट इज द मेन थिंग है. जो कस्टम्स डिपार्टमेंट इकट्ठे होते हैं कि यार पेपरलेस हो जाए, ट्रांजेक्शन स्मूथ हो जाए, तो इसके लिए आता है. इट इज एक्चुअली नाउ सेकंड पार्ट इंडिया इज एडेड इज एएलओ, लॉजिस्टिक ऑपरेटर सिस्टम. ये कैटेगरी इंडिया ने ले ली, जहां पे इंडिया ने बोला कस्टोडियन, टर्मिनल, जो वेयर हाउस ऑपरेटर्स हैं, दे आर ऑल्सो बिकमिंग द पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक एग्रीमेंट. ठीक है, इट वाज पार्ट ऑफ दिट, इज बेस्ड ऑन WCO सेम फ्रेमवर्क हियर. ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट हियर द ग्लोबल म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इज अगेन द पार्ट टू बी रिमेंबर्ड हियर. ठीक है, next is guys, who was removed from the position of officiating the chief executive officer of National Skill Development Corporation. Now skilling this year is very important because Skill India mission has recently completed, tell me how many years, 10 years or 11 years? Kaushal Vikas Yojana, Skill India mission. So there are two things on which India is, or the government is primarily focusing. Skilling बहुत बड़ा पार्ट है. दूसरा है आपका क्लाइमेट चेंज या फिर सस्टेनेबल एनर्जी, उस पर भी इंडिया बहुत काम कर रहा है. तो दे आर द टू थिंग्स दैट इज इंपॉर्टेंट हियर. So who has removed it, who has been removed here? The person is, that is Ved Mani Tiwari. ठीक है, Mr. Ved Mani Tiwari has been removed. So he was actually removed in the month of May. That was now being discussed during the parliamentary discussion. ठीक है जी. So coming to National Skill Development Corporation, it is a public-private partnership firm which is working under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. It's a not-for-profit company. ठीक है जी. It's a not-for-profit company which was set up under the Section 8 of the Companies Act. Government का शेयर है 49%. ये बेसिकली नॉलेज पार्टनर है वो स्किल इंडिया ऑल्सो, और जितनी भी हमारी स्किलिंग की मिशन है वहां सब पे नॉलेज पार्टनर ये है. Coming to this part, it provides funding, concessional loans and financial support to the startups, strategic help, incentivizing with respect of loans, equity grants हो गया, support service दे रहा है, और मार्केटिंग बना रहा है फॉर दिस सेट ऑफ स्टार्टअप्स हियर. इंपॉर्टेंट पार्ट, इट वांट्स टू स्किल 25 मिलियन इंडिविजुअल्स, 15 मिलियन फ्रॉम डिसएडवांटेज सोसाइटीज, एंड इट वांट्स टू सेट अप 50,000 स्किल सेंटर्स इन इंडिया. दैट इज द प्राइम गोल इन व्हिच एक्चुअली नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज वर्किंग हियर. ओके, सो दिस इज अबाउट योर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पार्ट हियर गाइस. आई होप नाउ विद इन दिस पास्ट 1 year, sorry not 1 year, 1 hour I would say, दिवान सर भी हंस रहे हैं कि सर एक साल तो हम लोग नहीं पढ़ा रहे इनको,
अभी 3 महीने बोला चित्रा पढ़ लो. If I talk to with respect to this past 1 hour, हमने काफी चीजें डिस्कस की हैं आपके साथ. ठीक है, प्लीज टू रिवाइज those things again and again. One request before Devanshu sir is approaching here. ठीक है जी, he's just adjusting his mic. तो जब तक वो आ रहे हैं तब तक मैं आप सबको सिर्फ यही बात बोलूंगा कि यार आप लोगों को ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे till this point of time I would say कि आपको जो पुराने मंथ आपने पढ़े हैं, ESI is one topic, here the things that you have read in the past are again important. तो उनको लिंक अप करना जरूर है. लिंक अप करके पढ़ो, तभी आपकी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी तरह से. ठीक है जी, चलो. So now let's welcome Devanshu sir here, and he will be now continue the section further from here. Hello everyone. I hope that you are enjoying the session, right? And your Josh is really high. So guys, now we will be moving ahead with the general awareness part, and we will, as we are covering the July 2025 month, so that let me tell you that July month is really very important for your upcoming examination, right? Because your exam is on the 18th of October, so the last 3 months of the general awareness part is the most important one here. So July, August, September, and the first 10 days of the October. And that's why this particular session is going to be a rapid fire one, because in the exam you will only be getting 25 minutes to answer 80 questions. And I believe कि सभी excited हैं for the part, right? Let's start it. And here is the very first question for all of you. The question is on the Asia's oldest elephant who passed away at the age of over 100 years recently. What is the name of this particular elephant? Please tell me in the chat box what is the right answer. So here let me tell you that यहाँ पर सिर्फ आंसर नहीं देना दोस्तों, आपको इंश्योर करना है कि आप एक ब्लैंक पेपर लेकर बैठे और जितने क्वेश्चंस, अराउंड 100 क्वेश्चंस आई हैव ब्रॉट हियर फॉर ऑल ऑफ यू, मेक श्योर कीजिएगा कि आप हर क्वेश्चन पे नोट डाउन करें कि आपका क्वेश्चन करेक्ट है या इनकरेक्ट है. सो व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? सो गौरव, नीलेश, गुरुराज सेइंग दैट ऑप्शन बी, दैट इज वत्सल इज द राइट आंसर. एब्सोल्युटली राइट. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 6. What was the theme of the day? तो जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट डे कवर करेंगे तो उसका थीम और आपको पता होना चाहिए अच्छे से फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? So what is the theme for this year? The theme for this year is rural empowerment, global impact. That is the right answer. I hope this is clear to everyone. So option C is the right answer. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Dash became the first ever Indian to win the Polygraphs Magic Skill Award conferred by the FIH Hockey Pro League. What is the name of this player? So the name of this player is Deepika Sehrawat. Absolutely right. Now apart from this, I would like to tell you here that there is an Indian hockey legend, that is Major Dhyanchand ji, right? And we celebrate and we commemorate his birth anniversary as National Sports Day. Can anybody tell me on which date we celebrate National Sports Day? National Sports Day is being celebrated every year on which date? It is celebrated every year on 29th of August. 29th August is the right answer, right? And this year, what was the theme? What was the theme this year? That is एक घंटा खेल के मैदान में. एक घंटा खेल के मैदान में is the theme for National Sports Day 2025 that we celebrate to commemorate the birth anniversary of Major Dhyanchand ji. Apart from that, recently it was in the news that a major event, that is Asian Hockey Championship, will be hosted by an Indian state. What is the name of that Indian state which will be hosting this championship? So this is basically Bihar, where it will be conducted. बिहार के अंदर इसको कंडक्ट किया जाएगा. That is the right answer. I can see in the chat box. Absolutely right. Nilesh, Gururaj, Amisha, everybody has given the right answer. Why other people are also not answering the questions? Guys, are you not aware of the answers? Please make sure that you are participating in the session by giving me the answer in the chat box, because that is going to be more productive for your examination point of view. जितना ज्यादा participate करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए productive होगा ये particular session. ठीक है, बढ़ते हैं अपने next question की तरफ. Which European country created history by qualifying for the first ever ICC Cricket World Cup? तो कौन सी यूरोपियन कंट्री है जो पहली बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाई है? द नेम ऑफ दैट कंट्री इज इटली. Italy is the right answer. Okay. Now guys, I would like to tell you here a very important part when it comes to the European country. Now let me ask you a very important part. Can anybody tell me the name of the first Egyptian player who has basically created a record of winning 3 consecutive PFA awards? So this is related to the soccer. Can anybody tell me the right answer to this question?
The right answer to this question is Mohammad Salah. Mohammad Salah is the right answer. Mohammad Salah is the right answer. Okay. Now, as we are talking about the football here, my dear friends, now let me tell you here that there is a event in our country that is Durand Cup. Durand Cup is the oldest football event of our country and एशिया का भी सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट इवेंट है. यहां पर आपको मुझे बताना है कि कौन सी टीम ने जीता है ये कप. कैन एनीबडी टेल मी दैट? The name of the team is Northeast United FC, which won this particular event. This is the right answer. Now, guys, as we are talking about the football, I would like to tell you here that the first Indian who has been appointed as a head coach of the Indian men's football team over the last decade. तो पिछले 10 सालों में हमने कोई भी इंडियन मेंस फुटबॉल टीम का इंडियन हेड कोच नहीं देखा था, बट दिस ईयर वी हैव सीन दैट द पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन? द नेम ऑफ द पर्सन इज खालिद जामिल. खालिद जामिल इज द राइट आंसर. आर यू गाइस एबल टू रिटेन ऑल these parts? So yes, absolutely right. Rampai Singh says sports C is very difficult to remember. Don't worry, I will make it easier for you. What we are just required to do is that we have to make sure that we are reading it again and again. जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे आप उतना ज्यादा आसान ये आपके लिए हो जाएगा. ओके. सो यहाँ पर एक न्यूज आर्टिकल से दोस्तों हमने 3 और न्यूज को कवर कर लिया है. दैट्स व्हाट आई कॉल माइंड मैपिंग टेक्निक, राइट? तो जब भी आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड को देखते हैं उससे आप कितनी इंफॉर्मेशंस और कितने डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हैं, दैट व्हाट आई कॉल द माइंड मैपिंग टेक्निक, राइट? सो बेसिकली ये चीज अगर आप अपनी डेली प्रिपरेशन में करेंगे, अभी रिवीजन के टाइम पर करेंगे, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर BWF वर्ल्ड टूर टाइटल इन द मेंस सिंगल्स एट द US Open 2025. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन हु हैज वन दिस इवेंट? द नेम ऑफ द पर्सन इज आयुष शेट्टी. आयुष शेट्टी इज द राइट आंसर. और दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन के US ओपन की. इफ आई आस्क यू अबाउट द टेनिस US ओपन, तो टेनिस का भी एक मेजर इवेंट है US ओपन, राइट? Which was held recently. Can anybody tell me the name of the men's singles winner title for this year? Name of the person is Carlos Alcaraz, who defeated Yannick Sinner, right? So Carlos Alcaraz defeated the Yannick Sinner in this particular final and he won the US Open. Let me tell you here guys that Wimbledon also took place, right? So Wimbledon भी हुआ था recently. वहां पर who was the winner? There Yannick Sinner was the winner who defeated Carlos Alcaraz. So US Open के अंदर Carlos Alcaraz is the winner, Yannick Sinner is the runner up. But in terms of Wimbledon, Yannick Sinner was the winner and Carlos Alcaraz was the runner up. Let me tell you here there is another important event which took place recently, that is Cincinnati Open. So Cincinnati Open भी हुआ था, वहां पर भी Carlos Alcaraz was the winner and Yannick Sinner was the on the losing end. आई होप दिस इज क्लियर. तो ये तो बात थी दोस्तों US ओपन के मेन सिंगल्स टाइटल की. जब हम बात करते हैं विमेन सिंगल टाइटल, तो उसके अंदर हु वाज द विनर? द नेम ऑफ द पर्सन इज अरायना सेबेलेंका. अरायना सेबेलेंका इज द राइट आंसर इन द विमेन सिंगल्स टाइटल. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द विंबलडन, in the Wimbledon we have already covered men's single title. So who was the winner? Sinner is the winner. And in the women's single title, who was the winner? It's Iga Swiatek who was the winner in the Wimbledon women's single title. Okay, are you guys able to cover this part from examination point of view? Will you guys be able to retain that from exam point of view? See, it is very important for you to cover these Grand Slam events. तो US Open बैडमिंटन से हम लेकर गए आपका US Open टेनिस की तरफ, राइट? बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द 10th एडिशन ऑफ कॉन्केकेफ गोल्ड कप टाइटल. So you have to tell me मैक्सिको ने कौन सी टीम को हराया in the finals to win this particular event. So what is the right answer? Right answer here is option B, that is United States. United States is the right answer. Let me tell you here guys that recently a Brazilian goalkeeper, ब्राजील यहां पर mentioned है, तो ब्राजील के गोलकीपर है फेबियो. So फेबियो ने सरपास किया है पीटर शिल्टन का रिकॉर्ड. पीटर शिल्टन इज फ्रॉम इंग्लैंड, राइट? तो इंग्लैंड के प्लेयर पीटर शिल्टन का रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट कैप्ड प्लेयर, इसको सरपास किया है. एंड फेबियो इज द ब्राजीलियन गोलकीपर है ये, राइट?
So please make sure that you are retaining all this information from examination point of view. तो यहाँ पर हमने सभी चीजों को कवर किया है. बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ. साहिल कीनी was appointed as the CEO of RBI Hub, Reserve Bank Innovation Hub. आपको आइडेंटिफाई करना है. So he is the co-founder of which Bengaluru-based API fintech company. ये कौन सी कंपनी के सीईओ रह चुके हैं और एक को-फाउंडर रह चुके हैं उस कंपनी के. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी? व्हाट इज इट? रेजर पे, सेतु, फिनबॉक्स, फोन पे, भारत पे. व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज सेतु. तो सेतु के को-फाउंडर हैं, द नेम इज साहिल कीनी, जिनको रिसेंटली बनाया गया सीईओ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नाउ अनदर क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर, एंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज that recently one of the former RBI governor was being appointed as the executive director in International Monetary Fund. Can anybody tell me what is the name of the person? So you guys are preparing for RBI, right? So RBI के former governor हैं ये. What is this? The right answer here is Urjit Patel. Urjit Patel is the right answer. ओके और दोस्तों हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई ने रिसेंटली बंधन बैंक को पेनलाइज किया है. बंधन बैंक पर पेनल्टी लगाई है 44.7 लाख रुपीस की रिसेंटली फॉर द रेगुलेटरी लैप्सेस. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू रिटेन ऑल दिस इंफॉर्मेशन. बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ. सो वेयर वाज लद्दाख्स फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल हेल्ड? लद्दाख का पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहां पर कंडक्ट किया गया था? It was conducted in Leh. Leh is the right answer. Now another part, guys, let me tell you here. You all know that India is targeting to have its own Bharatiya Antariksh Station by 2035, right? And 2035 is the same year when India is targeting to have a mission Sudarshan Chakra. That will be an aerial defense system of our country, right? Let me tell you here, apart from that, India is also having the target of lunar landing when we will be sending our human astronauts to the moon by which year? 2040. But when the human astronauts will be going to the moon or to other Mars, or you can say into the space, then what exactly are the physiological and psychological impacts that happen to the human body? In order to understand it, in order to monitor it, let me tell you here that a post has been created by ISRO in the Ladakh. What is that? It is Hope Post. Hope Post. And what exactly Hope stands for? It is Himalayan Outpost for Planetary Exploration. Himalayan Outpost for Planetary Exploration, which has been set up in Ladakh's Sokar Valley. तो सोकर वैली एक वैली है दोस्तों इन द लद्दाख जहां पर इस पोस्ट को सेटअप किया गया है. दैट इज होप पोस्ट. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? और अगर हम बात करते हैं यहां से, if I talk about the India's first human spaceflight mission, India का पहला human spaceflight mission, what is its name? The name of the human spaceflight mission is गगनयान मिशन. और ये जो गगनयान मिशन है दोस्तों, ये गगनयान मिशन से पहले इंडिया एक जीवन मिशन को लॉन्च करने वाला है, क्योंकि गगनयान मिशन के अंदर वी विल बी सेंडिंग द इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू द लोअर अर्थ ऑर्बिट, राइट? सो उससे पहले हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा मिशन लॉन्च करें जो एक अनक्रूड मिशन हो, ओके? और उसके अंदर हम एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजेंगे. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रोबोट? द नेम ऑफ द रोबोट इज व्योम मित्र. व्योम मित्र इज द राइट आंसर. ओके, so guys, that's how we have to make sure that we are retaining all this information from examination point of view. तो हर एक टॉपिक पर ऐसे ही माइंड मैपिंग के जरिए हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे सो दैट कि हमें याद रहे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. लेट मी टेल यू हियर दैट आई एम हेल्पिंग यू हियर टू कवर नॉट जस्ट द जुलाई करंट अफेयर्स बट द जून एज वेल, August as well. So let me tell you that all these articles are from the August current affairs. Okay, so आपको सब याद रहेगा from exam point of view. बढ़ते हैं next part की तरफ. So Bengaluru based company became the fifth unicorn of 2025. What is the name of that company? जो fifth unicorn बनी है, that is Jumbo Tail. Jumbo Tail is the right answer. Next question, which date is National Chartered Accountants Day? This is the PYQ, guys. This is the date when Institute of Chartered Accountants of India was been created. What is the date on which it has been created? And that day is being celebrated as the CA Day. Let me tell you here that the same day is also been celebrated as the GST Day.
सो जीएसटी डे भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है. व्हाट इज द डेट? इट इज 1st of July. 1st July is the right answer. Absolutely right. Vishnu, Amisha, Rumpa, Gururaj, everybody has given the right answer. That is option B, July 1. Exactly right. Now let me tell you here that GST की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, we all know that it is an indirect tax system of our country. But this year, recently during the 56th GST Council meeting, or next generation reform has been brought by the Indian government in the GST system. What exactly it is? तो जब GST को 2017 के अंदर 1st July 2017 के अंदर GST को इंप्लीमेंट किया गया था दोस्तों, उस टाइम पर इट वाज अ 4 slab tax structure. 4 slab tax structure. ठीक है. सो बट अगर हम बात करें ये 4 स्लैब्स की, कौन कौन सी 4 स्लैब्स थी यहां पर? 5%, 12%, 18% and 28%. But now recently during the GST Council meeting, they decided to basically restructure this 4 slab tax structure into the 2 slab tax structure. Now what exactly these 2 slabs are? So basically they have eliminated the 2 remaining slabs. Let me tell you here that slab 28% and the slab of 12% have been eliminated, and now we will be having 5% and 18% tax slab. Let me tell you here, along with the 5% and 18% tax slab, they have also added a special tax. The special tax will be of 40%, and this will be on the sin goods. तो sin goods के ऊपर लगेगा आपका 40%. So please tell me in the chat box what will be the special tax according to the restructured GST system in our country. What will be the special tax on the sin goods? What is the right answer? The right answer will be 40%. 40% is the right answer. Absolutely right. Next question. The Center for Railway Information System has launched Dash as a one-stop solution for passenger services on the 40th foundation day of CRIS. So, किस ऐप को लॉन्च किया इन्होंने? Which is a one-stop solution which has been launched? This is Rail One app. Rail One app is the right answer. और दोस्तों अगर हम बात करते हैं रेलवेज की, लेट मी टेल यू, रिसेंटली इंडियन रेलवेज ने ट्रायल किया एशियाज लॉन्गेस्ट फ्री ट्रेन. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रेन? द नेम ऑफ द ट्रेन इज रुद्रास्त्र. Rudrastra is the right answer. Okay, so this is another additional information that you have to retain from exam point of view. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Please tell me here, the National Sports Policy 2025 was unveiled with a vision, and according to this, which of the following is not one of the 5 foundational pillars which are outlined in the policy? तो इस पॉलिसी के अंदर जो 5 पिलर्स आपको दिए गए हैं, इसमें से कौन सा वो पार्ट नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. So option A, excellence on the global stage, sports for economic development, sports as a people's movement, infrastructure for elite coaching and integration with education policy. What is the right answer? Let me see who will give me the right answer. So Vishnu is saying option D. What about other people? What is it? The right answer here is option D, that is infrastructure for elite coaching. अगर दोस्तों हम बात करते हैं 5 pillars है, it includes excellence on the global stage, sports for economic development, sports for social development, sports as a people's movement and integration with education. National Education Policy 2020, that is the right answer. Okay, so ये 5 पिलर आपको पता होने चाहिए. National Sports Policy 2025. Next question. India participated for the first time in Talisman Sabar exercise. तो तालिस्मान साबर एक्सरसाइज में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, और यहां पर इसको किस कंट्री ने होस्ट किया और कौन सी कंट्रीज एज ऑब्जर्वर यहां पर इंक्लूडेड की गई थी, ये आपको बताना है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री व्हिच होस्टेड दिस एक्सरसाइज? द नेम ऑफ द कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया, एंड द कंट्रीज व्हिच वर द ऑब्जर्वर्स, दे वर मलेशिया एंड वियतनाम. दिस इज द राइट आंसर. एंड रिसेंटली गाइस देयर इज अनदर एक्सरसाइज, that is bright star exercise. Bright star exercise, it was been, so India participated in this multinational exercise, but where exactly this was hosted? It was hosted by Egypt and USA. तो इजिप्ट और यूएसए दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट, दोनों ने इसको होस्ट किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश सरपास डैश टू बिकम इंडियाज थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी. तो इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी कौन सी बनी है और किसको सरपास के? दोनों ही नाम आपको पता होने चाहिए. सो दिस इज भारतीय एयरटेल विच हैज सरपास टीसीएस टू बिकम इंडियाज थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल
company by market capitalization. Absolutely right. Next part. So where was Sri Nanak Niwas, India's first wooden Gurudwara built? तो कहां पर इसको बनाया गया दोस्तों? This Gurudwara, wooden Gurudwara has been built in फाजिल्का, पंजाब. फाजिल्की, पंजाब. अगर दोस्तों हम बात करते हैं पंजाब की, so Punjab is that first state in our country which has recently hired and empaneled sign language interpreters. तो sign language interpreters को hire किया है, empanel किया है पंजाब ने, and with this it became the first such state of our nation. Moving ahead. Which of the following bank became the first UAE bank to receive in principle approval for an IBU, that is International Financial Services Center Banking Unit in the GIFT, Gujarat? So what is the right answer? What is the name of this bank? So the name of this bank is Mashreq Bank. Absolutely right. Option B is the right answer. Mashreq Bank. Now guys, if I ask you that what exactly is the name of the new CEO, or we can say the chairman of the GIFT City, तो गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन का क्या नाम है? कैन एनीबॉडी टेल मी दैट? व्हाट इज द राइट आंसर? सो द नेम ऑफ द पर्सन इज संजीव कौल. दैट इज द राइट आंसर. So I can see in the chat box, most of the people have given me the right answer. Well done, guys. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Who became the first woman to be trained as a fighter pilot in Indian Navy? इंडियन नेवी की पहली वुमेन फाइटर पायलट, उनका नाम है सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टेट व्हिच बिकेम फर्स्ट टू अडॉप्ट आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग राशन अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट? द नेम ऑफ द स्टेट इज हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर. माय डियर फ्रेंड्स, इफ आई आस्क यू अबाउट द पंजाब, पंजाब के बारे में हमने ऑलरेडी कवर किया. द फर्स्ट स्टेट टू एम्पैनल साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, राइट. अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, सो यूपी रिसेंटली इंडिया सेकेंड एंड यूपीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट वाज बीन इनॉग्रेटेड इन गोरखपुर. गोरखपुर, उत्तर प्रदेश. लेट मी टेल यू हियर गाइस दैट रिसेंटली ड्यूरिंग द पार्लियामेंट सेशन, नॉर्थ इंडियाज first nuclear power project was also been discussed, and the name of the project is Gorakhpur Power Project, right? And this is in Fatehpur district of Haryana. तो आई होप कि इस दोनों गोरखपुर में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी. एक तो गोरखपुर पावर प्रोजेक्ट है आपका कौन सा? इन नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट. और अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट ऑफ उत्तर प्रदेश, और इंडिया का सेकंड, इट हैज बीन सेट अप इन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश. तो ये दोनों डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए. नाउ मूविंग अहेड, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के अंदर रिसेंटली रण संवाद नाम का इवेंट कराया गया था. अपार्ट फ्रॉम दैट, रिसेंटली खेलो इंडिया स्पोर्ट्स फेस्टिवल, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था इन जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, दल लेक, राइट. और इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर कौन सी स्टेट ने टॉप किया था? इट वाज मध्य प्रदेश ओनली. तो मध्य प्रदेश ने इसके अंदर टॉप किया था. तो मध्य प्रदेश से भी हमने दो न्यूज आर्टिकल्स को अच्छे से कवर किया. अगर हम बात करते हैं खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की, तो इसका मैस्कॉट क्या था? द मैस्कॉट फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट वाज हिमालयन किंगफिशर. हिमालयन किंगफिशर इज द राइट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. इफ आई आस्क यू अबाउट द राजस्थान, तो दोस्तों राजस्थान में रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया गया. इंडिया के पहले क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया गया, एंड इट वाज एग्जीक्यूटेड इन जयपुर, राजस्थान, राइट. सो आर यू गाइज एंजॉयिंग द सेशन गाइज? So basically I am just trying to give you all the information which is important for your upcoming examination, although we will be discussing that in the upcoming August part as well, but I just want कि मैं आपको अभी ही ready कर दूं so that you are able to answer all these questions in the exam. So are you guys enjoying this session? Please tell me in the chat box by giving me a thumbs up in the chat box. See, by using the mind mapping technique, you will be able to retain all this information from the examination point of view, and that is what the objective of the session is. Okay. So yes, I know that this is some additional information, but again and again when you will be covering that, you will be able to retain it from exam point of view. Next question. The university in India was renamed in honor of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. What is the name of the university? The name of the university is
Bangalore City University. This is the right answer. Moving ahead, who became the first Indian actress to receive a Hollywood Walk of Fame star under the motion pictures category? तो मोशन पिक्चर कैटेगरी के अंदर कौन सी हॉलीवुड एक्ट्रेस को, सॉरी कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम दिया गया? द नेम इज दीपिका पादुकोण. And guys, recently we also covered another important article that recently the Polygrass Award was being given to Indian hockey player. What is the name? दीपिका शेहरावत. तो दीपिका शेहरावत को पॉलीग्रास अवार्ड मिला है और दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम दिया गया है. I hope you guys will be able to relate both these information together from exam point of view. Next question, Prime Minister Narendra Modi ji was awarded key to the city of Buenos Aires. So कौन सी कंट्री ने उनको ये अवार्ड दिया गया, ये आपको बताना है चैट बॉक्स के अंदर. Which country awarded this, given this honor to Prime Minister Modi ji? The name of the country is Argentina. Next question, PM Modi ji was conferred with the officer of the Order of the Star of which country? कौन सी कंट्री ने ये अवार्ड दिया? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार. इट वाज गिवन बाय घाना. दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट वेसल नेम निस्तर was delivered to the Indian Navy in July 2025. उसको डिलीवर किया किसने? What is the name of that shipyard or dockyard जिसने इसको डिलीवर किया है? Name of the dockyard is हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड. That is the right answer. दोस्तों अगर हम बात करते हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की, लेट मी टेल यू हियर इन द मंथ ऑफ अगस्त स्कोप एमिनेंस अवार्ड वर बीइंग गिवन, राइट? और इस दौरान दो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर अवार्ड्स दिए गए. पहला कैटेगरी था आपका एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर, दूसरा था विमेन एम्पावरमेंट के अंदर. तो यहां पर दोस्तों आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अवार्ड जीता इन टर्म्स ऑफ एरो डिफेंस एंड डिफेंस, एरोस्पेस एंड डिफेंस. और अगर हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट, यहां पर आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अवार्ड जीता, स्कोप एमिनेंस अवार्ड्स. आई बिलीव कि आप सभी को ये याद रहेगा. बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे. यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड वाज बीन अवार्डेड to which personality for her pioneering work in the gender equality and reproductive rights? What is the name of this person who has been given this award? तो दोस्तों अगर एग्जाम में आपको याद ना आए तो बस ये याद रख लेना कि जो भी अवार्ड विनर था उसने ले लिया अवार्ड. So the name of the person is, what is the right answer? That is Varsha Deshpande. Absolutely right. Varsha Deshpande is the right answer. Okay. Moving ahead. R. Doraiswamy appointed as the first full-term MD and CEO of which institution? What is the name of this institution? The name of the institution is Life Insurance Corporation of India. Next question, the first Indian to run 100 meter in under 10.2 seconds. And with this, the person has created a national record. The name of the person is Animesh Kujur. Animesh Kujur is the right answer. Next question, Dash became the first police station in India to receive ISO 9001-2015 quality management system certification. What is the name of this police station? It is Arthunkal Police Station. That is the right answer. So guys, these questions are quite very direct in nature, right? So there is nothing much to discuss about it. And जहां जहां पर आपको additional information चाहिए होगी, I will be giving you that as well. Okay. Moving ahead. World Population Day is observed on 11th of July. What was the theme for 2025 edition for this global observance? तो World Population Day जो 11 जुलाई को सेलिब्रेट होता है, इस साल उसकी क्या थीम है? तो दोस्तों इस साल अगर हम थीम की बात करें, the theme was empowering young people to create the families they want in a fair and hopeful world. So basically जो young people हैं उनको हम empower करने वाले हैं so that they can create the families they want in the fair and hopeful world. This is the theme for World Population Day, and on which date it has been celebrated every year? It is celebrated every year on 11th of July. That's it. Next question, Jasprit Bumrah surpassed which Indian legend to become highest overseas 5 wickets haul in Test cricket history? What is the name of this bowler? तो जसप्रीत बुमराह ने ये रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों, और ये रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया कपिल देव जी का, राइट? The captain of the 1983 World Cup winning team, that is Kapil Dev. Apart from that दोस्तों, recently मैं आपको बताना चाहता हूं कि रविचंद्रन अश्विन ने IPL से रिटायरमेंट लिया है, और चेतेश्वर पुजारा, another Indian cricketer, he took the retirement from all forms of cricket. I hope this is clear. Next part, Department of Post ने extend किया आधार बेस्ड बायोमेट्रिक EKYC सर्विसेज. वो किसको किया है और किस अकाउंट्स के लिए किया है? एलिमिनेटिंग द नीड फॉर फिजिकल पे इन स्लिप्स एंड विड्रॉल वाउचर्स. So what exactly is the name? Let's see who will give me the right answer here.
So Udit, basically the timeline for these sessions is we are starting the session at 6 p.m. Okay, 6 बजे को हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं, रिवीजन सेशन आप सभी के लिए, सो दैट आपकी एक अच्छी रिवीजन हो सके और आप खुद को एनालाइज कर सके वेदर यू आर एबल टू रिटेन ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और नॉट। ओके, तो ये काफी जरूरी है हमारे लिए कि हम रिटेंशन पर ध्यान दें, रिवीजन पर ध्यान दें। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ज्यादा हमारी रिटेंशन बढ़ेगी। Moving ahead, so right answer to this question is recurring deposit in public provident fund accounts, जिसके लिए इन्होंने इसको यहां पर extend किया है। Next part, who has been appointed as the new managing director and CEO of Gujarat International Finance Tech City? I already told you the right answer to this question. It is Sanjay Kaul. Sanjay Kaul is the right answer. Next question, a joint sea exercise Ja Mata. So Ja Mata exercise दोस्तों किन forces के बीच में हुई है? It has been conducted between the Coast Guard organizations of the two countries. What are the name of the two countries? Let me tell you here, guys. One is India. That's why we are covering it. And we are talking about Ja Mata. ठीक है? So Ja से आता है आपका जापान. So इस तरीके से याद कर सकते हैं आप, Indian Coast Guard and Japan Coast Guard. Option B is the right answer. So I can see in the chat box, Amisha, Gururaj, Sarabni, Rumpa, Nilesh, everybody is giving the right answer to all these questions. Well done, guys. बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। So, who is the 7th chief executive officer of the International Cricket Council? तो आईसीसी के नए CEO बने हैं। What is the name of this person? The name of the person is संजोग गुप्ता। संजोग गुप्ता जी को इलेक्ट किया गया है as the ICC CEO. Okay, next question. Which high-profile operation exposed the illegal pharmaceutical drug syndicate? So, कौन सा ऑपरेशन किया गया था दोस्तों? द ऑपरेशन इज बेसिकली ऑपरेशन मेडमैक्स। ठीक है, ऑपरेशन मेडमैक्स को रिसेंटली किया गया था। और इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इन्होंने भी एक ऑपरेशन रिसेंटली किया था अगेंस्ट द ड्रग्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑपरेशन? सो बेसिकली एक ऑपरेशन के साथ दूसरे ऑपरेशन को कवर करेंगे तो चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होंगी। ओके, द नेम इज वीड आउट। Weed out operation is the right answer. Next question, India announced the construction of 3-way new strategic petroleum reserves. तो इंडिया के 3 नए strategic petroleum reserve कहां पर बनाए जाएंगे? They will be set up in Bikaner, Mangalore and Bina. So these 3 locations याद रखिए आप, BMB, Bikaner, Mangalore, Bina, जहां पर 3 strategic petroleum reserves को establish किया जाएगा, okay, to strengthen energy security of our country. Next question, Yannick Sinner won the Wimbledon men's singles title. Apart from Wimbledon, which other Grand Slam title did he win in 2025? तो विंबलडन के अलावा उन्होंने कौन सा और टाइटल जीता था? तो देखो दोस्तों, यहां पर हम सारे टाइटल्स आज कवर कर रहे हैं अपने सेशन के अंदर, जिससे कि आप इसको अच्छे से याद कर सके। ओके, सो द नेम ऑफ दैट इवेंट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने जीता था। आप देख सकते हैं विंबलडन के अंदर यानिक सिनर ऑफ इटली वाज द विनर एंड कार्लोस अल्कराज ऑफ स्पेन वाज द रनर अप। अगर हम बात करें विमेन सिंगल्स की तो ईगा स्वियातेक वाज ऑन द टॉप, she is the winner and runner up was Amanda Anisimova of USA। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको याद रहेंगी। Now if I ask you who is the winner of the US Open and Cincinnati Open, US Open और Cincinnati Open में किसने जीत हासिल की? Who was the winner? The person name is Carlos Alcaraz who was the winner. Carlos Alcaraz was the winner and Sinner was the runner up। Okay, but in terms of Wimbledon, इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? विंबलडन का विनर कौन है? दैट इज सिनर। तो सिनर इज द विनर ऑफ विंबलडन। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च अ जीनोम सीक्वेंसिंग इनिशिएटिव। तो ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया स्टेट ने। द नेम ऑफ द स्टेट इज गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा की हैंडलूम इंडस्ट्री की ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली अनाउंस की गई। द नेम ऑफ द पर्सन इज माधुरी दीक्षित। याद रखिए, उड़ीसा की हैंडलूम इंडस्ट्री की ब्रांड एम्बेसडर बनी है माधुरी दीक्षित। ओके, अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र स्टेट ने रिसेंटली अनाउंस किया दैट इट विल बी सेलिब्रेटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे इन ऑर्डर टू कोमेमोरेट द बर्थ सेंटिनरी ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन आवर कंट्री। तो उनकी सेंटिनरी बर्थ एनिवर्सरी थी दोस्तों, दैट इज ऑन 7th of August। 7 अगस्त को ये सेलिब्रेट की गई।
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे अब से हम हर साल सेलिब्रेट करेंगे महाराष्ट्र के अंदर ऑन 7th of August. लेट मी टेल यू दैट 7th of August को हम एक और इंपॉर्टेंट डे बनाते हैं, नेशनल हैंडलूम डे. नेशनल हैंडलूम डे हम सेलिब्रेट करते हैं टू कोमेमोरेट अ हिस्टोरिक इवेंट दैट इज स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था दोस्तों? 1905 के अंदर हुआ था. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. अगर हम बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर इंडिया का पहला मेगा पोर्ट है. मेगा पोर्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्ट? वर्धवन पोर्ट. वर्धवन पोर्ट इज द राइट आंसर, वर्धवन पोर्ट. इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं फर्स्ट आंगनवाड़ी, इसको वधमना विलेज के अंदर लॉन्च किया गया. राइट. इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर क्लीन स्ट्रीट फूड हब लॉन्च किया गया है by the Food Safety and Standard Authority of India, FSSAI. What is its name? The name of this particular clean street food hub is basically Molly. और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश was the winner in खेलो इंडिया स्पोर्ट्स फेस्टिवल, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल. दोस्तों इस साल दो पहले एडिशन हुए हैं, एक तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, दूसरा खेलो इंडिया बीच गेम्स. खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की बात की जाए तो इट वाज कंडक्टेड इन श्रीनगर, दल लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अगर हम खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात करते हैं, इट वाज हेल्ड इन दमन एंड दीव. ओके, सो आई बिलीव आप सभी ये डिफरेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर पा रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स को समझ पा रहे हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए एक बार ही करने से आई नो कि याद नहीं हो पाएगा, राइट. इसलिए बार बार हम ये क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे इन द अपकमिंग टाइमलाइन ऑफ दिस सेशन सो दैट यू कैन आंसर मी द क्वेश्चन. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप इस सेशन को दोबारा देखेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो आपको ये सब डिटेल्स भी अच्छे से याद हो जाएंगी. आई होप दिस इज क्लियर. एब्सोल्युटली राइट. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. सो विच विलेज ऑफ द सिक्किम बिकेम द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज? तो सिक्किम के अंदर दोस्तों डिजिटल नोमैड विलेज बनाया गया है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट विलेज? So basically the people who loves doing work from home as well as they want to explore the world, right? तो ऐसे लोगों के लिए those kind of people can go to that particular nomadic village और वहां पर दोस्तों सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं so that वहां पर प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन है, फैसिलिटीज हैं so that आप वहां पर जाके काम भी कर सकते हैं और उस जगह को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं. एंड व्हाट इज द नेम? इट इज याकटन विलेज ऑफ सिक्किम, याकटन विलेज. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Dash was appointed as the CEO and MD of Hindustan Unilever Limited. तो ये पहली वुमेन बनी है to lead the company in its 92-year history. तो कंपनी के 92 ईयर हिस्ट्री के अंदर ये पहली वुमेन है जिनको MD CEO बनाया गया है. The name of the person is प्रिया नायर. प्रिया नायर is the right answer. I hope this is clear. इसके अलावा दोस्तों दो पॉइंट्स मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं. सबसे पहला पॉइंट, रिसेंटली जगुआर लैंड रोवर, आप सभी ने जगुआर लैंड रोवर का नाम जरूर सुना होगा और काफी लोगों की ड्रीम कार भी होगी, राइट. लेट मी टेल यू हियर दैट इसके पहले फर्स्ट इंडियन सीईओ बनाए गए हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन? दैट इज पीबी बालाजी. पीबी बालाजी इज द राइट आंसर. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों हमने कवर किया कि फर्स्ट इंडियन हेड कोच इन द लास्ट 1 decade of the Indian men's football team. What is the name of the person? The name of the person is Khalid Jamil. Khalid Jamil is the right answer. Absolutely right. I am really glad to see that you are giving me the right answers. Nilesh, Gururaj, Sonu, Amisha, Mins, everybody has given the right answer. Well done, my dear friends. Next question. The first and only Indian cricketer to be featured in the Time 100 Creators list. What is the name of the person? Prajakta Kohli is the right answer. Next question, the football club which won the 2025 FIFA Club World Cup, जहां पर 32 teams compete कर रही थी for the very first time in a World Cup style format. What is the name of the winner? It's Chelsea, which was the winner. Next part, before moving on to the next question, please tell me the name of the person who became the first Egyptian to win 3 consecutive PFA awards. What is the name of that person? The name of the person is Mohammad Salah. Mohammad Salah is the right answer. Absolutely. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द पेन पिंटर प्राइज. तो पेन पिंटर प्राइज किसको मिला इस साल? दोस्तों अगर पेन पिंटर प्राइज अगर आपको एग्जाम में नहीं याद आया तो बस ये याद रखिएगा आप कि
जिसने भी जीता था उसने प्राइज ले लिया था. सो द नेम ऑफ द पर्सन इज लीला अबुलेला. लीला अबुलेला इज द राइट आंसर. दोस्तों पेन प्रिंटर प्राइज की हम बात कर रहे हैं. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. लेट मी टेल यू दैट रिसेंटली रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स भी दिए गए थे. रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स. सो ये अवार्ड किस किस को मिले? सबसे पहला पार्ट एडुकेट फॉर गर्ल्स. Educate Girls. This is the NGO of India, and the very first time that an Indian NGO has won the Raymond Magsaysay Award. Let me tell you that Raymond Magsaysay मैं क्यों आपको कवर करा रहा हूं, क्योंकि इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है. ठीक है. सो पहला अवार्ड है एडुकेट टू गर्ल्स. देन इट वाज शाहीना पर्सन फ्रॉम द मालदीव्स. She won the award for the ocean conservation. Ocean conservation के लिए इनको अवार्ड मिला. Now the third person is Flaviano Antonio. So he has basically been conferred with this award for offering help to the marginalized person, right? And he is from Philippines. लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं रेमन मैग्सेसे की, ये अवार्ड भी फिलीपीन के प्रेसिडेंट के नाम पर ही बना है. दैट इज रेमन मैग्सेसे अवार्ड. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. लेट मी टेल यू अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट. इट रिसेंटली इंडिया और फिलीपीन इन दोनों कंट्रीज ने अपने 75 इयर्स ऑफ द बायलैटरल रिलेशंस को सेलिब्रेट किया. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं यहां पर 1 और लगा देता हूं, 175. सो दिस वाज द फाउंडेशन ईयर ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो 175th फाउंडेशन ईयर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया है. आई होप यू गाइज आर एबल टू मेक द पेस, राइट? Are you guys enjoying the way we are covering this session? See guys, when one word is coming to your mind, जब आप अगली बार इस सेशन को देखेंगे, you will relate that ये सारे नाम भी आपको याद आएंगे. और पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आएगा, so definitely you will be able to answer the question in the examination. Okay? Absolutely right, Amisha, Gururaj, Nilesh and all other people who have given me the right answer. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. द फर्स्ट एवर मलेरिया ट्रीटमेंट अप्रूव्ड स्पेसिफिकली फॉर न्यूबॉर्न्स. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट? द नेम ऑफ द ट्रीटमेंट इज कॉटम बेबी. ऑप्शन बी कॉटम बेबी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू ग्रांट एग्रीकल्चर इक्विवेलेंट स्टेटस टू एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री को एग्रीकल्चर इक्विवेलेंट स्टेटस दिया गया है. कौन से स्टेट ने दिया है दोस्तों? लेट मी टेल यू, इट इज द सेम स्टेट which has recently declared to celebrate Sustainable Agriculture Day to commemorate the birth anniversary of MS Swaminathan ji, right? And the right answer is Maharashtra. Maharashtra is the right answer. Let me tell you guys that while commemorating the birth anniversary of Dr. MS Swaminathan ji, recently Dr. MS Swaminathan Food Peace Prize भी दिया गया था, and this was given to a Nigerian scientist. What is the name of the person? Ademola Adenle. Ademola Adenle is the name of the person who was the winner of this particular part. ठीक है जी? Okay, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. Australia's first homegrown orbital rocket which crashed after the liftoff during its maiden test flight in July 2025. What is the name of this rocket? The name of the rocket is Eris. Option D, Eris is the right answer. Next question. Dash became the first private sector expert to be elected as the president of UNGCNI. United Nations Global Compact Network India के पहले प्राइवेट एक्सपर्ट जो कि बने हैं इसके प्रेसिडेंट. द नेम ऑफ द पर्सन इज वैशाली निगम सिन्हा. नेक्स्ट क्वेश्चन. So which country became the first country in the world to enforce a comprehensive social media ban? तो 16 साल से नीचे के बच्चों के लिए प्रॉपरली सोशल मीडिया बैन यहां पर इंपोज किया गया इस कंट्री के अंदर. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंट्री? इट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. 100th warship designed and delivered by the Indian Navy's Warship Design Bureau. What is the name? What is its name? The name is INS Udaygiri. Let me tell you guys that recently INS Udaygiri and INS Himgiri, this is the very first time that Indian Navy has commissioned 2 stealth frigates
together on a single day in a single place, that is विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर इन दोनों को कमीशन किया गया रिसेंटली। आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी, ये 100th और 101st स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं जिनको बनाया गया है और इनको विशाखापट्टनम पर पहली बार कमीशन किया गया। दोस्तों इसके साथ साथ हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, वो क्या है? रिसेंटली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट हैज पास्ड 2 सेपरेट बिल्स of a single ministry on a single day. Let me again make it very clear for all of you. So सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि दो बिल्स को एक सिंगल डे पे और एक सिंगल मिनिस्ट्री के ये दो बिल्स थे, इनको पास किया गया। What is the name of the ministry? The ministry becomes really very important. The name of the ministry is Ministry of Ports, Shipping and Waterways. That is the right answer. Okay. I hope you guys are able to connect with this. This is the right answer to this question. Absolutely right. Next question. 14th edition of bilateral military drill exercise Bold Kurukshetra. Bold Kurukshetra को इंडिया और सिंगापुर के बीच में कंडक्ट किया गया। कहां कंडक्ट किया गया? The name of the place is जोधपुर। जोधपुर is the right answer. अगर हम जयपुर की बात करते हैं, जयपुर is that place जहां पर इंडिया का फर्स्ट क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अपना डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन टारगेट सेट किया है बाय 2030 तक। what is the target that they will be having? The target is of 1.5 billion tons, right? Next question. Shubman Gill became the first test captain in history to score 4 centuries in his debut test series. अपने debut test series में उन्होंने 4 सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड ब्रेक किया। पहले 3 सेंचुरीज का रिकॉर्ड था विराट कोहली का, डॉन ब्रैडमैन का, राइट, एज अ कैप्टन। बट यहां पर शुभमन गिल ने रिकॉर्ड बनाया दोस्तों, इन विच ट्रॉफी? दैट वाज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी अगेंस्ट इंग्लैंड। तो पहले पर्सन बने हैं टेस्ट हिस्ट्री में टू स्कोर 4 सेंचुरीज इन हिज डेब्यू टेस्ट सीरीज, राइट। ही सरपास्ड द जॉइंट रिकॉर्ड ऑफ 3 सेंचुरीज लाइक बाय विराट कोहली, डॉन ब्रैडमैन, वॉरविक आर्मस्ट्रॉन्ग, ग्रेग चैपल एंड स्टीवन स्मिथ। तो सबके नाम याद करने जरूरी नहीं है, यहां पर अभी शुभमन गिल का नाम याद रखिए आप, ठीक है। माइलस्टोन को अचीव किया गया एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के अंदर, और यहां पर ये अब तीसरे ऐसे इंडियन बन गए हैं जिन्होंने 700 से ज्यादा रन को स्कोर किया in a bilateral series, in a single test series, joining the elite company of Sunil Gavaskar and Yashasvi Jaiswal. और उन्होंने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड ब्रेक किया है ऑफ इंडियाज हाईएस्ट टेस्ट रन स्कोरर अगेंस्ट इंग्लैंड एज कैप्टन अगेंस्ट इंग्लैंड। ओके, दैट इज ऑल दैट वी नीड टू कवर हियर। मूविंग अहेड, विस्लो ज़ेब्स्की मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट इन पोलैंड वाज हेल्ड, जहां पर तेजस्विन शंकर ने इंडियन नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया। कौन से इवेंट में ब्रेक किया ये आपको कवर करना है, ये आपको बताना है चैट बॉक्स के अंदर कौन से इवेंट में तेजस्विन ने ये रिकॉर्ड बनाया है। द नेम ऑफ द इवेंट इज डेकाथलॉन। डेकाथलॉन इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट। सो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। टोटल 7826 पॉइंट्स को इन्होंने स्कोर किया, फिनिशिंग 4th ओवरऑल इन दिस पर्टिकुलर इवेंट। नाउ गाइस, आई वुड लाइक टू आस्क यू अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट दैट जस्ट 2 days बैक वी सॉ दैट देयर इज अ इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर who has won the Fight Swiss tournament. Fight Swiss tournament जीता है इंडियन ग्रैंडमास्टर ने। What is the name of the person? Let me tell you that she became the first person in the entire history to win 2 consecutive Fight Swiss tournament. What is the name? The name of the person is Vaishali R. Pragnanda. That is the right answer. Vaishali Ramesh Babu Pragnanda is the right answer to this person. I hope this is clear. इसके अलावा दोस्तों हम चेस की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली इट वाज अनाउंस्ड दैट फाइड 2025 वर्ल्ड कप विल बी टेकिंग प्लेस। वेयर एग्जैक्टली इट विल बी टेकिंग प्लेस? दिस विल बी टेकिंग प्लेस इन गोवा। गोवा के अंदर इसको होस्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों रिसेंटली रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप को होस्ट किया गया, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। एंड ड्यूरिंग दिस इवेंट, यहां पे जो चेस इवेंट हुआ था दोस्तों, उसके विनर कौन थे? चेस स्टार्ट्स फॉर सी एंड हियर मैग्नस कार्लसन इज द विनर, मैग्नस कार्लसन। ओके, आई होप ये सारी डिटेल्स आप याद कर पाएंगे फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नरेंद्र मोदी बिकेम द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। किसका रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया है दोस्तों? इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया इंदिरा गांधी जी का। तो इंडिया के लॉन्गेस्ट
लॉन्गेस्ट सर्विंग नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, पहले नॉन कांग्रेस पीएम टू कंप्लीट 2 full terms in the office. Match Jawaharlal Nehru in winning 3 consecutive Lok Sabha elections in 19, and 2024. Let me tell you here, guys, that during the Independence Day speech on 15th of August 2025, he gave a speech of 103 minutes. And that was also the longest ever speech by any prime minister on as the Independence Day address. So ये भी हमें याद रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ. Who became the first woman to be appointed as the VC of IGNU? तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की पहली वुमेन to be appointed as the vice chancellor. What is the name of the person? Professor Uma Kanjilal is the right answer. Option B. Let me tell you here, guys, that recently India rankings 2025 भी रिलीज की गई थी. ठीक है, जहां पर अगर हम ओपन यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज कैटेगरी, यहां पर इग्नू ने टॉप किया है. इग्नू इज ऑन द टॉप और इग्नू की पहली विमेन वाइस चांसलर बनी है प्रोफेसर उमा कांजीलाल. प्रोफेसर उमा कांजीलाल इज द राइट आंसर. अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट मी टेल यू हियर अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब हम बात करते हैं इंडिया रैंकिंग 2025 की, इट इज बेस्ड ऑन नेशनल इंडिकेटर रैंकिंग फ्रेमवर्क और यहां पर डिफरेंट कैटेगरीज हैं दोस्तों, जिसके अंदर हमें रैंकिंग्स देखने को मिलती हैं. ओके, सो अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कैटेगरी की, ओवरऑल कैटेगरी, तो ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा इंस्टीट्यूशन टॉप पे था? इट वाज आईआईटी मद्रास. आईआईटी मद्रास इज द राइट आंसर. अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी कैटेगरी की, यूनिवर्सिटी, सो आईआईएससी बेंगलुरु वाज ऑन द टॉप. आईआईएससी बेंगलुरु वाज ऑन द टॉप. इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर अगेन आईआईटी मद्रास वाज ऑन द टॉप. इन टर्म्स ऑफ कॉलेज, it was Hindu College which was on the top. Hindu College. When it comes to the skills university, skills, it was Symbiosis Pune which was on the top. Apart from that, let me tell you here, guys, a very important point, and that is that for the very first time in this particular ranking, Sustainable Development Goal Institution category was been added, and this category was also topped by IIT Madras. So IIT Madras कहां टॉप किया है? SDG इंस्टीट्यूशन कैटेगरी के अंदर, ओवरऑल कैटेगरी के अंदर, इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर. तो इन तीनों कैटेगरीज में IIT Madras is on the top. Will you guys be able to retain all this information from exam point of view? क्या आप सभी याद कर पाएंगे इस पूरी इंफॉर्मेशन को? देखिए दोस्तों, यहां पर हमने एक रिपोर्ट को भी कवर कर लिया. लेट मी टेल यू हियर व्हाई आई एम कवरिंग दिस रिपोर्ट. Because in the previous year we have seen question in the examination of RBI Grade B officer exam phase 1. तो phase 1 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए हमें इसको कवर करना बहुत जरूरी है. इसके साथ एक और पॉइंट बताता हूं दोस्तों आपको. आईआईटी मद्रास की हमने बात की, तो रिसेंटली इंडिया की पहली मैरीटाइम हैकेथॉन को ऑर्गेनाइज किया गया और जिसको हमने नाम दिया मैराथन. तो मैराथन इसको नाम दिया गया और ये मैराथन को भी कंडक्ट किया गया आईआईटी मद्रास के अंदर. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर मैरीटाइम हैकेथॉन, दैट इज मैराथन, वाज कंडक्टेड इन आईआईटी मद्रास. ठीक है जी, याद रहेंगी सबको डिटेल्स. डू नॉट वरी, एक दो बार रिवाइज करेंगे, डेफिनेटली आप याद रख पाएंगे इसको. ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. पराग जैन इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग. तो इन्होंने किसको सक्सीड किया, ये क्वेश्चन में आपको बताना है. तो पराग जैन बने हैं नए चीफ ऑफ रॉ, बट इन्होंने किसको किया है दोस्तों ओवरटेक, किसको इन्होंने सक्सीड किया? द नेम इज रवि सिन्हा. इसके साथ साथ दोस्तों रिसेंटली डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रिसेंटली अपॉइंट किए गए. व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? So he has already been served as the former Director General of CRPF and ITBP. What is the name of the person? Anish Dayal Singh. Anish Dayal Singh is the right answer. Absolutely right, guys. So this is something that we should remember from examination point of view. और दोस्तों रिसेंटली इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया था. He just resigned as the Vice President of India. So who is the new Vice President of our country? Can anybody tell me that? Who is the new Vice President? Recently the elections just got over. What is the name of the person? So the new Vice President of our country, that is
CP Radhakrishnan. CP Radhakrishnan is the right answer. So I'm really glad to see everybody is able to give me the answer in the chat box, guys. That's really great. That shows कि आप करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड हैं और आप अच्छे से उनको कवर भी कर रहे हैं. ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे. So the researchers at which of the following university developed world's first silicon-free CMOS computer using two-dimensional materials? तो two-dimensional materials का इस्तेमाल करके इन्होंने इसको बनाया है. What is the name of the university? The name of the university is Pennsylvania State University. Absolutely right. Next question. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली 4 साल कंप्लीट किए और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है दोस्तों वो 5 P's प्रिंसिपल को फॉलो करता है. इसमें से आपको बताना है इट इज नॉट वन ऑफ द 5 P's. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 P's? व्हाट एग्जैक्टली इट इज? इट इज प्रोडक्शन. ऑप्शन ई इज द राइट आंसर. सो ये 5 P's कौन कौन से हैं दोस्तों? पीपल, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्लेटफॉर्म, पॉलिसी एंड प्रोस्पेरिटी. दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which city in India became the first to launch a QR code-based digital house address system, जिसको इंटीग्रेट किया गया डिजिपिन के साथ? What is the name? What is the name of this state? It is इंदौर, मध्य प्रदेश, जहां पर ये लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनल जियोस्पेटियल प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025 रिसेंटली दिया गया. वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया? इट वॉज बीन गिवन टू इनकॉइस. इनकॉइस इज द राइट आंसर. इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद ने रिसीव किया जियोस्पेटियल प्रैक्टिशनर अवार्ड. एब्सोल्युटली राइट. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कलिंगा रत्न अवार्ड 2024 वाज बीन अवार्डेड. व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज बीन गिवन दिस अवार्ड? कलिंगा रत्न अवार्ड दिया गया है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी को. धर्मेंद्र प्रधान जी इज द राइट आंसर. ठीक है. और दोस्तों अभी हम देख रहे हैं कलिंगा रत्न अवार्ड. एक लोकमान्य तिलक अवार्ड भी दिया गया रिसेंटली एक मिनिस्टर को. कैन एनीबडी टेल मी द नेम ऑफ द मिनिस्टर? तो क्या नाम है इन मिनिस्टर का? कोई बताएगा चैट बॉक्स के अंदर? लेट मी सी हु विल गिव मी द राइट आंसर. लोकमान्य तिलक अवार्ड इट वाज बीन गिवन टू नितिन गडकरी जी. नितिन गडकरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिम्बेक्स एक्सरसाइज 32nd एडिशन ऑफ सिम्बेक्स एक्सरसाइज वाज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? दो देशों के बीच में एक्सरसाइज हुई, इंडिया और दूसरी कंट्री कौन से दोस्तों? सिम्बेक्स. राइट, सिम्बेक्स. सिंगापुर इंडिया बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज. सो सिंगापुर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग को रिसेंटली शेड्यूल किया गया. इट इज गोइंग टू डेब्यू इन द 2026. आपको आइडेंटिफाई करना है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है. So the co-owner and the brand ambassador in July 2025. What is the right answer? It's Yuvraj Singh. Yuvraj Singh is the right answer. Next question. World Day for International Justice marks the adoption of Rome Statute, which led to the establishment of which organization? तो दोस्तों इंटरनेशनल वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस. सो बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द अडॉप्शन ऑफ रोम स्टैच्यू. अब बेसिकली जब रोम स्टैच्यू को बनाया गया था तो कौन सा इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया था? दैट वाज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंडियन स्टेट व्हिच बिकेम द फर्स्ट टू ग्रांट एग्रीकल्चर इक्विवेलेंट स्टेटस टू एनिमल हस्बेंड्री. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट? इट इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र इज द राइट आंसर जिसने ये दिया है. ओके. सो दोस्तों ये पिछले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है. गलती से यहां पर है, डोंट वरी, बट इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट है. वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस हम सेलिब्रेट करते हैं जुलाई 17 को. और जुलाई 17 1998 को रोम स्टैच्यू अडॉप्ट किया गया था और इस साल 27th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की. इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए इट इज इन हेग नीदरलैंड्स. तो हेग नीदरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. निसार ये पहली ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन है बाय नासा एंड इसरो. ठीक है. अब आपको आइडेंटिफाई करना है यहां पर कि ये it is going to observe Earth using dual frequency synthetic aperture radar combining NASA's dash band and ISRO's S band. तो NASA का कौन सा बैंड यूज होगा और इसरो का S बैंड यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा. So the band of the NASA is L band. L band is the right answer. आप देख सकते हैं NASA इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन ये पहली कोलैबोरेशन है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की बिटवीन NASA एंड इसरो. ठीक है. और ये हमें बहुत ही अच्छा डेटा देने वाला है दोस्तों. एक हाई स्पेटियल रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा एंड इसको लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा. श्रीहरिकोटा. दोस्तों अगर हम बात करते हैं सैटेलाइट लॉन्च पैड्स की, सैटेलाइट लॉन्च पैड, तो रिसेंटली पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया कि इंडिया का 3rd
सैटेलाइट लॉन्च पैड कहां पर बनाया जाएगा? दैट विल बी इन श्रीहरिकोटा. And Sriharikota is the same place where India's first spaceport has been established. अगर हम बात करते हैं इंडिया का जो सेकंड स्पेसपोर्ट होगा, ये कहां पर होगा? Can anybody tell me that? Where will be India's second spaceport? The second spaceport of our country will be in Tamil Nadu. It will be in Thoothukudi, Tamil Nadu. That is the right answer. I hope guys that आप सभी एंजॉय कर रहे हैं इस तरीके को, जहां पर हम एक सिंगल इंफॉर्मेशन से आपको 2-3 इंफॉर्मेशन और कवर करा रहे हैं, जिससे कि आप एग्जाम के अंदर अच्छे से चीजों को याद कर पाएं और कवर कर पाएंगे. ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे. कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च किया इंडिया का पहला फुल्ली एआई पावर्ड फिनटेक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपनी? इट इज लरवरे प्राइवेट लिमिटेड. दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state became the first to have less than 1200 voters per polling station following the special intensive revision of electoral rolls? So my dear friends, it is the same state which is going to host the men's hockey Asia Championship. What is the name of that state? It is Bihar. Bihar is the right answer. Next question. आयकर ने सेलिब्रेट किया अपना 97th फाउंडेशन डे. When established in 1929, आयकर was originally named as. आयकर का पहले क्या नाम था? Indian Council of Agricultural Research. पहले किस नाम से जाना जाता था? So it was basically known as the Imperial Council of Agricultural Research. तो 16 जुलाई 1929 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था एज Imperial Council of Agricultural Research, और फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इसको चेंज किया गया. Let me tell you guys that 1926 के अंदर यूपीएससी को भी क्रिएट किया गया था. ओके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. तब उस टाइम पर ये पब्लिक सर्विस कमीशन था, राइट, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस इट बिकेम द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. और हम इसके दोस्तों सेंटिनरी ईयर बना रहे हैं. वी विल बी सेलिब्रेटिंग इट सेंटिनरी ईयर. और ये सेंटिनरी ईयर हम कब से बनाएंगे, कौन से मंथ में बना रहे हैं? इन अक्टूबर 2025. अक्टूबर 2025 के अंदर हम ये सेंटिनरी ईयर बनाने वाले हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है जी, सबको क्लियर है ये डाउट? सबको क्लियर है ये पार्ट? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट इसने कंप्लीट किया 10 years ऑफ स्टडी. इट वाज लॉन्च्ड एट विच एयरपोर्ट इन 2015? सो इट वाज लॉन्च्ड एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली इन 2015. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज द विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट. सो बेसिकली एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है दोस्तों विच टेल्स अस gives us the forecast of the fog, कि कहां पर फॉग होगी, उसकी क्या इंटेंसिटी होगी, जिसके मदद से हम बेसिकली काफी चीजों को रेगुलेट कर सकते हैं कि फ्लाइट्स का टाइमिंग क्या होगा. एंड वी कैन आल्सो यूज बेसिकली इशू द एडवाइजरी अमंग द पब्लिक कि आप इस दौरान पर अपने घर के बाहर ना निकलें बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ फॉग देयर. ओके, सो ये एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया था 2015 के अंदर, जिसके 10 साल पूरे हुए हैं. आई होप दिस इज क्लियर. और दोस्तों इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड का पहला एआई पावर्ड एयरपोर्ट कॉरिडोर बनाया गया है. कैन एनीबडी टेल मी हियर दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द एयरपोर्ट? द नेम ऑफ द एयरपोर्ट इज दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो डैश सरपास डैश टू बिकम इंडियाज थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन. ये हमने ऑलरेडी कवर किया था, बट एक ये टेस्ट है आपका कि क्या आप इस क्वेश्चन को सही से आंसर कर पाएंगे. लेट मी सी हु विल गिव मी द राइट आंसर. आई कैन सी इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी इज गिविंग मी द राइट आंसर. ऑप्शन सी दैट इज, सॉरी ऑप्शन डी दैट इज भारती एयरटेल ने सरपास किया है टीसीएस को. एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेस्ट इंडीज ने रिकॉर्ड किया थर्ड लोएस्ट एवर टाइटल टेस्ट टाइटल इन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने अपना थर्ड लोएस्ट टोटल यहां पर बनाया. व्हाट इज द टोटल? लेट मी टेल यू हियर दैट पहले हमने ऐसा क्वेश्चन देखा गया जहां पर थर्ड हाईएस्ट चेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कुछ साल पहले आरबीआई के एग्जाम में, और यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर है 27. नेक्स्ट क्वेश्चन. आईसीसी अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट्स फॉर द नेक्स्ट 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बोर्ड जिसको ये दिया गया है? सो होस्टिंग राइट्स हैज बीन गिवन टू इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम. वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम is under construction on the which river in Tibet by China. तो चाइना इसको बना रहा है तिब्बत रीजन के अंदर. कौन सी रिवर पे बना रहा है दोस्तों? ब्रह्मपुत्रा रिवर पे. और इसको वहां पर क्या कहा जाता है? यारलुंग सांगपो. यारलुंग सांगपो इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड यूथ स्किल डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 15 और आपको बताना है व्हाट इज द थीम फॉर दिस ईयर। इस साल वर्ल्ड यूथ डे की क्या थीम है ये दोस्तों आपको बताना है। So vibrant vlogs, please do not disturb the flow of the class, right now make sure that you are focusing on the session। बाकी सब जो चीजें हैं उसको सेशन के बाद आप हैंडल कर लीजिएगा, right? It is not going to change। Moving ahead, what is the theme? The theme for it is youth empowerment through AI and digital skills। Youth empowerment through artificial intelligence and digital skills is the theme for this particular year World Youth Skill Day। Next question, अदिति चौहान वो पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने क्लब फुटबॉल खेला यूरोप के अंदर। अब आपको मुझे बताना है दोस्तों, सो शी इज रिटायर्ड फ्रॉम द स्पोर्ट एंड वाज अपॉइंटेड मेंटर ऑफ विच टीम? कौन सी टीम की मेंटर ये बनी है? सो शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंटर ऑफ वॉरियर्स एफसी। वॉरियर्स एफसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला एक्वाटेक पार्क सेटअप किया जाएगा असम के अंदर, तो कौन सी जगह पर इसको सेटअप किया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट एक्वा पार्क, इट विल बी सेटअप इन बागीबरी। बागीबरी इज द राइट आंसर। दोस्तों मैं आपको एक और पार्ट बताना चाहता हूं दैट देयर इज अ नेशनल वाटरवे 57। नेशनल वाटरवे 57 हैज बीन ऑपरेशनलाइज्ड फॉर इनिशिएटिंग द कार्गो मूवमेंट आफ्टर अ डेकेड इन असम। तो असम के अंदर दोस्तों कार्गो मूवमेंट इस नेशनल वाटरवे से नहीं हो रही थी, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दिस नेशनल वाटरवे 57 हैज बीन ऑपरेशनलाइज्ड फॉर द कार्गो मूवमेंट। कैन एनीबडी टेल मी कि नेशनल वाटरवे 57 कौन सी रिवर के ऊपर है? सो इट इज बेस्ड ऑन विच रिवर? It is based on कोपिली रिवर। कोपिली रिवर। अगर हम बात करते हैं नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 1 कौन सी रिवर के ऊपर है दोस्तों? ऑन विच रिवर इट इज? इट इज ऑन रिवर गंगा। रिवर गंगा इज द राइट आंसर। So I hope this much part is clear to everybody, right? बढ़े हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो रूट बिकेम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन द टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री, और इन्होंने किस प्लेयर का रिकॉर्ड सरपास किया ड्यूरिंग द एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज? व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? दैट इज रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया है और ये बन चुके हैं सेकंड हाईएस्ट टेस्ट स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। एब्सोल्युटली राइट। नाउ 10th वर्ल्ड मैंग्रोव डे वाज ऑब्जर्व्ड। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव डे? World Mangrove Day, 10th World Mangrove Day was being observed with the theme of protecting wetlands for our future. Protecting wetlands for our future is the right answer. Next question, Ajay Seth को अपॉइंट किया गया as the chairman of IRDI, Insurance Regulatory Development Authority of India। इन्होंने किसको सक्सीड किया है दोस्तों? किसको रिप्लेस किया as the CEO of IRDI? What is the right answer? The right answer is Devashish Panda। Next question, Divya Deshmukh became dash Indian woman to be awarded the Grandmaster title and first Indian woman to reach the final of the Fight Women's World Cup। What is the number? Divya Deshmukh कौन से नंबर की इंडियन वुमेन बनी है to be awarded the Grandmaster title? And that is 4th। She has become the 4th woman। आप देख सकते हैं दोस्तों, और यहां पर 4th इंडियन बनी है ये। इससे पहले हम बात करें so she is कोनेरू हम्पी, द्रोणावली हरिका एंड आर वैशाली। तो दोस्तों ये 3 लोग हैं, कोनेरू हम्पी, द्रोणावली हरिका एंड आर वैशाली, ठीक है। और चौथी बनी है दिव्या देशमुख। एंड रिसेंटली दोस्त माय डियर फ्रेंड्स, आर वैशाली, दैट इज वैशाली रमेश बाबू प्रगनंदा, शी हैज वन द फाइट स्विस टूर्नामेंट। तो फाइट स्विस टूर्नामेंट को ये जीत चुकी हैं। द नेम इज वैशाली रमेश बाबू प्रगनंदा। एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि श्री एंड डेजी रॉकवेल, इनको पेन ट्रांसलेटर्स अवार्ड मिला है फॉर विच बुक? कौन सी बुक के लिए इनको ये अवार्ड मिला? सो दे हैव बीन गिवन दिस अवार्ड फॉर द बुक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। इसके अलावा अगर एक और साउथ एशियन विनर की बात की जाए, शी वाज सारा शगुफ्ता। सारा शगुफ्ता को अवार्ड मिला है फॉर हर बुक आइज आइज आइज, जिसको ट्रांसलेट किया उर्दू के अंदर भाई जावेरिया हसनैन। जावेरिया हसनैन ने इसको ट्रांसलेट किया इन उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वन देयर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव यूईएफए वुमेन्स यूरो टाइटल? तो इन्होंने स्विट्जरलैंड को हराया दोस्तों इन द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव यूईएफए वुमेन्स यूरो टाइटल। द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री इज इंग्लैंड। इंग्लैंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इज बीइंग सेटअप। कहां पर इसको सेटअप किया गया है दोस्तों, और किसने सेटअप किया है? ये दोनों चीजें आपको बतानी है। सो इट हैज बीन सेटअप इन पानीपत एंड एल&टी एनर्जी ग्रीन टेक ने इसको सेटअप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट हिंदी मीडियम मेडिकल कॉलेज
इंडिया का पहला हिंदी मीडियम मेडिकल कॉलेज कहां पर सेटअप किया गया? इट वाज सेटअप इन जबलपुर मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट? कौन सी स्टेट ने पहला माइनिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट, एंड दैट इज झारखंड। झारखंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which university became the first university to operationalize a campus in India under the UGC's 2023 regulations on foreign higher educational institutions? So what exactly is the name of the university? It is University of Southampton, UK. Absolutely right, option C is the right answer. और ये जो कैंपस है दोस्तों कहां पर बनेगा? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला ने अपना पहला शोरूम खोला है इंडिया के अंदर, जिसका नाम रखा गया टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर। आपको आइडेंटिफाई करना है वो किस प्लेस पर खुला है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस? सो द नेम ऑफ द प्लेस इज मुंबई। लेट मी टेल यू हियर गाइस दैट टेस्ला ने अपना पहला चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ही खोला है। ओके, तो ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी चाहिए फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which monument located in Champhai district of Mizoram was declared as monument of national importance by ASI? तो ASI ने उसको monument of national importance declare किया है। What is the name? The name is Lianpui Minhirst Monument. Lianpui Minhirst Monument, that is the right answer. So my dear friends, this was the last question of our today's session, and with this the July 2025 month is completed for the general awareness and economic and social issues current affairs from examination point of view. I believe guys that आज का सेशन आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा, एंड अगर आप नए हमारे YouTube चैनल पर तो दोस्तों डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया, and you can subscribe to the bell icon to receive all the latest updates of the different courses and videos जो हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। इसके अलावा आज के सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कि आपको इसकी रिवीजन करनी है, और रिवीजन आप के लिए आपको क्या करना होगा? आपको टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा, और टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको अच्छे से रिवाइज करना होगा। ठीक है, मेक श्योर कीजिए कि आप अच्छे से रिवीजन करें सो दैट आपको हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो गाइस, इट वाज रियली ग्रेट टू हैव ऑल ऑफ यू हियर इन द टुडेज सेशन, एंड आई बिलीव कि आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया और आपके लिए बहुत ही यूजफुल और फ्रूटफुल भी रहेगा इस सेशन इन योर अपकमिंग आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एग्जाम। अब जिस स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी है दोस्तों, आप डेफिनेटली अपनी क्वेरीज को चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, एंड आई विल बी टेकिंग योर क्वेरीज हियर। I am open for any kind of query, any kind of doubt that you are facing in your examination preparation. So if you are having any doubt or any query, please feel free to revert here. I am just waiting for one more minute, guys. If there will be no query, then I think that it will be really a good time to conclude the session, right? So apart from that, it is very important for you guys to make sure that last 3 months के current affairs आप अच्छे से cover कर रहे हैं from the upcoming examination point of view for when it comes to the general awareness part, right? अगर हम economics and social issues की बात करें, finance current affairs, reports, RBI notifications, तो वो definitely आप 4 से 5 महीने का cover कीजिएगा from the exam point of view, क्योंकि ये आपको phase 2 के अंदर भी काफी help करने वाला है। And right now I can see here that there are no queries in the chat box, and that means that we can conclude the session, right? So we can conclude the session. Okay, so there is not any single query. So still अगर आपको कोई query आती है आप comment section के अंदर बता सकते हैं, या फिर you can share your queries at hello@edutab.co.in, and you can also call us at 8146207241. So my dear friends, it was really great to have all of you here. Now I will be meeting you in the next session. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.